मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, आप सब संसद के वरिष्ठ सदस्य हैं। मेरा आज आग्रह निवेदन है कि निधन संबंधी जब उल्लेख करूं तो कोई सदस्य आपस में चर्चा न करें। मुझे आज भी अच्छा नहीं लगा और ये अच्छी परंपरा नहीं है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 361 श्री N.K. प्रेमचंद्रन। Sir, question number 361. Sir, statement is laid on the table of the House, sir. Sir, can I? Sir, my first supplementary is the right of consumers in e-commerce are infringed for various reasons, such as unfair contract terms that favors the sellers and waive the consumer rights, and vulnerability to payment fraud and cyber attacks, and exploitation through non-disclosure of the exact quality of products. Sir, consumers are also faced time-consuming return and refund processes, misleading advertisements through false images or product descriptions, a high risk of data breaches, theft of personal information, and unauthorized use of consumer data. Additionally, there is often a lack of clear information regarding the identity of sellers. The identity of sellers is the main problem. Unfortunately, it is not being disclosed. Even in any platform, it is not being disclosed. So my specific definite question to the Honorable Minister is whether the government proposes to initiate action, stringent action, to strengthen the regulations, establishment efficient mechanisms, and appoint grievance redressal cells to resolve these issues within a particular or within a stipulated time frame, and whether it proposes to conduct periodic inspections to ensure product authenticity, adherence to the standards, and transparency in information regarding the product quality and the seller identity. Thank you, sir. Sir, N.K. Premchandran ji is the most knowledgeable and commands the respect from all sections of the House because of his regularity and technical know-how, technical knowledge about the overall House proceedings. He has raised a very valid question, but I would like to tell, but after replacement of the Consumer Protection Act 1986 by Consumer Protection Act 2019, बहुत एग्जॉस्टिव प्रोविजंस इसमें हमने रखा है सर। एक तो प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही कंज्यूमर हेल्पलाइन हमने शुरू कर दिया है। कंज्यूमर हेल्पलाइन के 17 लैंग्वेजेस में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्लास एक्शन के लिए जो भी उन्होंने विषय उठाया है, उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमने लिया है। एक तो हमने डार्क पैटर्न्स, जो जैसे उन्होंने कहा ई कॉमर्स वाले जो भी इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में भी उन्होंने कहा, तो इसमें भी थोड़ा कुछ इश्यू है मैन्युफैक्चरर्स का, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमने अभी फॉर स्पेशली फॉर द कंज्यूमर आइटम्स वी हैव ऑलरेडी डन दैट। एंड डार्क पैटर्न 13 prominent dark patterns have been declared, which are the dark pattern. For example, जैसे उन्होंने कहा फॉल्स अर्जेंसी और डाटा जो वो एक बार देते हैं उसको मिसयूज करना, कंफर्म शेमिंग है, ऐसे बहुत है, सास बिलिंग है, और सब्सक्रिप्शन ट्रैप में जो लोगों को फंसाते हैं उसमें है। और कंज्यूमर इस CCPA में टोटली अभी तक हमने 477 नोटिसेस दिए हैं, एक्शंस लिए हैं और रिफंड भी करवाया है। उसके साथ ही साथ जो पूरा लास्ट कंज्यूमर हेल्पलाइन में ग्रीवेंसेस एड्रेसल के लिए एक ऑफिसर भी रखना पड़ेगा, एंड
even 48 hours, he has to acknowledge the complaint and try to resolve it. There are so many measures. I have given answers in details. Thank you, sir. माननीय Sir, सदस्य Consumer Protection Act of 1986, I think it requires drastic amendments in tune with the time or in tune with the new developments in the IT sector in particular. So the second part of second supplementary question, two parts. Part A of the question is whether the government proposes to make it mandatory for sellers to provide an acknowledgement and registration number along with the time of the complaint via SMS for complaints registered through toll-free numbers, and to ensure adequate infrastructure and staffing to limit maximum waiting times and enable timely handling of complaints. B part of my second supplementary, sir, is there are a lot of coaching centers in which this fraudulent activities are going on. So my question, B part of the second supplementary is, with the increasing concerns about the misleading advertisement, particularly with regard to the exaggerated success claims by coaching institutes, what steps has the government taken to regulate such practices and protect the students from unfair trade practices in the coaching sectors? Thank you very much. Sir, many notices have been issued to the these coaching classes, especially as far as overall, if I can tell what has been done, appointment of grievances officers for the grievances redressal and ensure the grievances officer acknowledges the receipt of any consumer complaint within 48 hours and addresses the complaint within 1 month. It is a mandatory from the date of the receipt of complaint. Ensure the advertisements for marketing of the goods or services are consistent with the actual characteristics. Many such notices have given for the, maybe for greenwashing or for the coaching classes, where one student actually, Ashwini Vaishnavji is also here. He is one of the topper in the civil services. Many such toppers photo used for the many coaching institutes, and we have issued notices and we have penalized them, and whatever the penalty we are imposing, we are publishing it. Because of that publicity, their reputation is coming under the question mark. That's why it has, relatively it has come under control, but we are continuously monitoring it, and we have repeatedly giving the notice, and also penalty has been levied on every coaching classes where they have done such a misleading advertisement. श्री नरेश मस्के, श्री नरेश मस्के, no, श्री मणिकम टैगोर. Thank you, sir. The government's own reply admits lacks of compliance, core-level counterfeit listings, and repeated seizures by the Bureau of Indian Standards. The Central Consumer Protection Authority has even ordered recalls of unsafe products. Yet, instead of strict enforcement, the government is relying on voluntary compliance and self-declarations by the platforms. Sir, consumers are still receiving fake products. Grievance systems are reduced to automated responses. My simple question is, sir, why is the government still allowing platforms like Amazon India to hide behind safe harbor? Will the government fix direct liability or continue to protect platforms while customers suffer, sir? Sir, after the raid, notices are issued, penalties have been levied, and also whenever such a reputation of such things are done, huge penalty has also been levied. And in many cases, we have made them to withdraw the products. In spite of that, along with the ease of doing business, we have to see that consumer is protected. For that, CCPA has taken against several entities the violation of consumer rights and unfair trade practice in the e-commerce sector. Such action is withdrawal of the misleading advertisement, recall of the product, 800, for example, ISI mark without certification when they are using, and there we have told them to withdraw and replace them and also refund them. And many such things. From 2020 till date, 997 notices have been issued by Legal Metrology Department also.
Along with that, penal action has also been taken against the entities for the sale of the product bearing the serious certification marks and spurious certification mark. After the action taken, CCPA, several e-commerce entities further strengthened their grievances redressal mechanism. 1,440 crores have been refunded so far. That is the biggest, one of the biggest achievement of this department in the recent past. Number 342, Shri T.M. Selva Ganpati. 362, माननीय मंत्री महोदय, on the table of the House. Anup Dotre. Thank you, Speaker, sir. Sir, my question is, what safety precautions are taken by Indian Railways on the routes where Vande Bharat train operates at the maximum speed of 160 kilometers per hour? Honorable Speaker, sir, one of the first points is that the Vande Bharat train itself is fitted with many safety features which are inherent in the train. If you recall, all the past trains, they used to be coupled together, coaches used to be coupled together, and that itself has been now replaced by semi-permanent couplers. So the entire train now becomes one unit, and that itself brings a huge safety thing. Second major safety feature that we have introduced in the Vande Bharat train is anti-climbing feature. So when it's a very technical thing. Whenever the coaches are connected together, then the latest technology which is prevalent in the entire world, that is anti-climbing feature, so that one coach cannot climb onto the other one. So that kind of technology is already introduced in the Vande Bharat train. The third thing is that in many places we have introduced safety fencing on both sides of the track. And the fourth thing, of course, is fitting the kavach, which is going on at a very rapid pace. The fifth item on safety on the Vande Bharat routes is the trains are now fitted with very high resolution cameras. In a recent incident in Muzaffarnagar area, we could catch the basically the culprits who were throwing stones on the Vande Bharat train just with a very small picture of the person captured on the Vande Bharat train camera, and using that and some AI technologies, we were able to reach exactly to the house where the person was residing. So all these steps are being taken, Honorable Speaker, sir. Dr. V. Kalanidhi. Sir, it's very unfortunate that the Honorable Minister yesterday made a political speech about land acquisition of Tamil Nadu, Kerala and West Bengal, which are election-facing states. Sir. But I would like to know what is the status of land acquisition in all the states throughout the country. And also, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu had written regarding the clarity on the land acquisition, because the railway had said certain places that the land is not required and the amount was not being sanctioned. So we would like to have some clarity through the parliament so that we can take proactive actions in the state of Tamil Nadu for the development of railways, sir. And the picture was painted as if that the state governments are not interested in people. I would like to request him to rectify his Honorable Speaker, sir. I would like to give a true picture to the honorable member through you, sir. The truth is that there are many other opposition states which are cooperating very much in the land acquisition. It's a question of facts that I've presented, and I've given that in replies in multiple questions. And if Honorable Speaker, sir, directs, I can once again submit all those facts on the table of this House. Those are facts. There is absolutely no question of making it a political thing. Wherever states are supporting, work is going on very well. It's not a question of politics. Railway is a matter which connects the common citizen with the services which governments can provide.
And it is a duty of each and every party, each and every state government to make sure that they take proactive steps. They take proactive steps in getting the railway projects done, because that is where our country's common citizens will get justice. Good, very fine. वायकर, थैंक यू सर। मेरा पर्टिकुलरली कोकण रेलवे के बारे में प्रश्न है। कल मुझे बातें करने को नहीं मिली बिकॉज मैंने टेबल किया था। धन्यवाद सर। तटीय क्षेत्रों की कंटिन्यूटी के लिए कोकण रेलवे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बचे हुए 263 किलोमीटर ट्रैक को डबलिंग के लिए जो डीपीआर तैयार की जा रही है, उसके पूरा होने का प्रोजेक्टेड टाइम क्या है? इसके साथ ही ट्रैक डबलिंग का काम पूरा होने के बाद इस रूट पर यात्रियों को बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त वंदे भारत सर्विसेज कब तक शुरू किए जाने की संभावना है? धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोंकण रेलवे एक अलग स्ट्रक्चर में है। बाकी देश में सारी रेलवेज जोनल रेलवे के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड है, जो कि इंडियन रेलवेज एक्ट के तहत उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। कोंकण रेलवे कंपनी की तरह बनाई गई थी। उस समय जो भी निर्णय लिया गया था, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है। इसमें 5 शेयर होल्डर्स हैं, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गोवा सरकार, कर्नाटक सरकार और केरल सरकार। इन 5 शेयर होल्डर्स में से 2 ने, महाराष्ट्र सरकार ने और गोवा सरकार ने क्लियरली अपना कंसेंट दिया है कि आप इस कंपनी को जोनल रेलवे में कन्वर्ट कर लीजिए। हमारे जो बिकॉज इस कंपनी का सर जो बेसिकली कंटिन्यूसली लॉस में ये है KRCL, तो जब कंटिन्यूसली लॉस में तो उसको कैसे उसका इन्वेस्टमेंट करे, किस तरह से नेटवर्क का एक्सपेंशन करे। हमने कर्नाटक से भी और केरल से भी बार बार रिक्वेस्ट किया है, कई लेटर्स लिखे गए हैं, और जब भी मेरा किसी से संवाद होता है केरल के मुख्यमंत्री जी से या कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से, उनको भी मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि देश का हित आगे सोचिए। आप अपना छोटा जो सेल्फ इंटरेस्ट है उससे ऊपर उठ के देश का हित सोचिए। वो अगर काम हो जाता है तो कोंकण रेलवे के इस पूरे नेटवर्क का, जैसे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पूरे रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे कोंकण में भी आगे बढ़ सकता है काम। लेकिन मैं माननीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोंकण रेलवे के जो जितने क्रिटिकल चोक पॉइंट्स हैं उनके डबलिंग के लिए ऑलरेडी डीपीआर बनाने का काम कंप्लीट करने पे आया है। वो बहुत तेजी से उसमें प्रोग्रेस हुई है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में हम लगातार प्रयासरत हैं। श्री E.B. Eden. Thank you, sir. Sir, Vande Bharat trains have been widely accepted by the people of India. Sir, my specific question is, there is a Vande Bharat train which starts from Kasaragod, ends in Thiruvananthapuram, again vice versa. Sir, there is a train which starts from Kochi to Bangalore. Presently, it have 8 coaches. Would the government take initiative to, we have a request for making it as additional 8 coaches to make it 16 coaches, because entire Vande Bharat trains are overbooked, sir. So there is also a proposal to start a train in the morning, as well as a train from Ernakulam to Chennai also, sir. These are trains which are of high demand. There is a huge lobby which is working, bus lobby which is working against a department. Also, sir, a small suggestion. You are greeting all the passengers with a flower, which is again covered with plastic, and nobody even cares to take that flower. It's a waste of money and environment pollution. Can you make sure that Honorable Speaker, sir, I have repeatedly placed before you and through you before the honorable members that the problem in Kerala can be solved primarily by increasing the capacity, and the capacity has to increase from north to south. And that's why we have taken up these major capacity expansion projects, right from Kasaragod to Shornur to Kayamkulam to Ernakulam, Kayamkulam, then all the way to Thiruvananthapuram, and then from Shornur to Palakkad to Coimbatore. These projects we have taken up as DPR, and that's extremely important,
And that is where I continuously seek the support of the state government regarding the specific point that Honorable MP has asked. Yes, we always start with 8 coaches on a track so that at least the train gets established. And once the train is established, then over a period of time, we increase either to 16 coaches or to 20 coaches, depending upon the demand. I also would like to thank the honorable member from the opposition side, because they are the ones who used to criticize Vande Bharat. And now his statement that Vande Bharat has been well accepted by the people. So that's a very welcome thing. That is the way the country will progress. Question number 363, Sri Dullu Mahato. धन्यवाद सर। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्य, पहले प्रश्न संख्या। क्वेश्चन नंबर 363। माननीय मंत्री महोदय। सर, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, मगर मैं सबसे पहले सर्वप्रथम धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। अभी हमारे सामने प्रधानमंत्री जी भी अपने विचार रखे। मैं थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहना है, लेकिन बहुत से हमारे सांसद भी बोलना है, इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा। कहाँ से शुरू करें कुछ समझ नहीं आता है। आपकी विदाई के जिक्र से दिल भर आता है। यानी ये जो हम विदाई कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोग फिर आएंगे, लेकिन बहुत से हमारे मेंबर्स फिर यहाँ पर नहीं आ सकते किसी वजह से। सभापति जी, मैं आज राज्यसभा में कार्यकाल पूरा करे साथियों की विदाई के अवसर पर चंद बातें रखना चाहता हूं। रिटायर होने वाले कोई साथी दोबारा इस सदन में आएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिनको शायद अवसर न मिले। सभी जानते हैं कि राज्यसभा एक परमानेंट और कंटिन्यूअस हाउस है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया और आपने भी अपने स्पीच में किया। सांसद यहाँ 6 साल से लिए चुनकर आते हैं और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। आज वही क्रम दोहराया जा रहा है और राजनीति में रहने वाले लोग यानी पब्लिक लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते और देश की सेवा के जज्बे में टायर्ड भी नहीं होते, रिटायर भी नहीं होते और टायर्ड भी नहीं होते जो पब्लिक लाइफ में है। मैं स्वयं अपने लंबे संसदीय जीवन में पहली बार इस सदन का सदस्य बना हूं। पहली बार मैंने 16 फरवरी 2022 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। जल्दी ही इस सदन से मेरा पहला कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्यसभा में विद्वान सांसद साथियों के साथ मैंने जो अनुभव हासिल किया है वो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ जो बातें बोली जाती है ये हमको सीखने लायक है, क्योंकि मैं कम से कम 39 साल असेंबली में था और उसके बाद में यहाँ भी अब 20 साल होने आया। मोर और लेस मेरा 54
55 साल चल रहा है और इसमें कोई घटोती नहीं हुई, तो हम कोशिश करें कि यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। और मैंने ये अनुभव हासिल किया, सभापति जी, अपने पूरे संसदीय जीवन में मैंने सदन में नियमित रूप से उसे उपस्थित रहने और चर्चाओं में भाग लेने की पूरी कोशिश करता हूँ और यहाँ अटेंड करने का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इसलिए कि हमको कुछ अनुभव मिलता है अलग अलग राज्यों से आए हुए नेताओं से, अलग अलग विचारधारा के लोगों से, अलग अलग अपने जो कुछ भी अनुभव है वो अनुभव भी यहाँ पर वो बताते हैं, तो वो सीखने लायक रहता है। और मैं हालांकि 54 साल मुझे कंप्लीट हो गए, तो भी मुझे सीखने की जरूरत पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि हर आदमी संपूर्ण ज्ञानी नहीं होता है, उसका ज्ञान उसी वक्त बढ़ता है जैसा वो पढ़ते जाता है, जैसा वो सुने जाता है, सीखे जाता है, तभी उसका और भी ज्ञान बढ़ते रहता है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ सभी पक्षों की बातों को सुनना, अच्छी बातों को सीखकर व्यवहार में लाने का प्रयास मैं लगातार करता रहा हूं। उच्च सदन में मेरा बहुत सा खट्टा मीठा अनुभव रहा है। मैं इस मत का हूं कि इस सदन को और अधिक सार्थक बनाने के लिए बहुत कुछ नए प्रयासों की जरूरत है, ताकि उच्च सदन समाज को और देश को बेहतर संदेश दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं सबसे पहले श्री HD देवेगौड़ा जी नहीं है, वो तो वहां उपस्थित थे लेकिन यहाँ नहीं है, तो HD देवेगौड़ा जी का उल्लेख करना चाहूंगा। वे प्रधानमंत्री और कई पदों पर रहे। मैं देवेगौड़ा को बहुत दिन से 54 साल से जानता हूँ, उनके साथ ही मैं काम किया, लेकिन क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। वो तो प्रेम हमारे साथ किए, मोहब्बत हमारे साथ, शादी मोदी साहब के साथ की, ये रिसेंटली हुआ, तो आप ऐसा माने मुझे मालूम नहीं है। सर शरद पवार जी एक राष्ट्रीय नेता है, उनके साथ भी हमारा दशकों का जुड़ाव रहा है। मुझे खुशी है कि वे दोबारा इस सदन का मार्गदर्शन करेंगे। संसदीय मामलों के गहन जानकार हमारे DMK के साथी तिरुचि शिवा जी अगले 6 साल सदन की कार्रवाई में फिर भाग लेंगे और उन्होंने बहुत कुछ अपनी बातों को रखा। रामदास अथवाले साहब, जिनका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो अपने कविता के रूप में ही हमेशा मोदी जी का गुणगान गाते हैं। हमेशा, आपको छोड़ के दूसरा कविता ही उनको नहीं आती। जो कविता उन्होंने लिखती है वो सिर्फ आपके बारे में लिखती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये 6 साल अब तो पूरा मिला है उनको, आगे तो जरा कम करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। सर दिग्विजय सिंह जी को पूरा देश जानता है। एक दशक तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा। राज्यसभा सांसद और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय काम किया और वो रिपोर्ट भी आज उन्होंने आपके सामने पेश किया। सर KTS तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने संसदीय वाद विवाद को गरिमा दी। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक स्वतंत्रता और विभिन्न मुद्दों पर उनके भाषणों ने सदन पर गहरी छाप छोड़ी है। हमारे मुखर साथी शक्ति सिंह गोयल और नीरज डांगी की बातें करते हुए मैं भावुक होता हूं, इसीलिए कि अपनी योग्यता और क्षमता के साथ इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है। सदन के साथ साथ संसदीय समितियों में भी
अच्छा काम किया है। विभिन्न विधेयकों पर चर्चा और ज्वलंत विषयों पर पूरी तैयारी के साथ अपनी बातें रखी और लोगों को सोचने पर मजबूर किया। श्रीमती रजनी पाटिल समाज कल्याण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर लगातार मुखर होते रही। मुझे भरोसा है कि श्रीमती फूलो देवी नेतम कमजोर तबकों की बातों को सदन में आगे भी मजबूती के साथ रखेगी और उनको 6 साल का मौका और मिला है। श्रीमती फौजिया खान और श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी के योगदान को ये सदन याद रखेगा, क्योंकि वो हमेशा हर सब्जेक्ट पे खुद इन्वॉल्व होकर वो अटेंड करके अपनी विचार को आपके सामने, सदन के सामने रखते थे। उसी ढंग से साकेत गोखले, वो भी एक विद्वान है, युवा है, उसने भी बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया है। राज्यसभा के उपसभापति जी हरिवंश जी शालीन और शिष्ट व्यवहार वाले नेता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और जिनकी तारीफ आज मोदी साहब ने पहली बार किए होंगे, मुझे मालूम है, तो उनका भी पीरियड खत्म हुआ, लेकिन वो हमेशा जो काम देते हैं वो काम इस सदन में करते रहते थे और आगे भी जिनको वो काम मिलेगा वो करते रहेंगे। बहुत सभ्य व्यवहार और सभ्यता से काम करने वाले एक हमको सभापति मिले, उपसभापति मिले। सर, अच्छा कानून बनता है तो उसमें सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के सांसदों का भी बराबर की भूमिका होती है। संसदीय समितियों में उनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हमेशा कोऑपरेशन से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, ना कि हेट्रेड से। तो इसलिए मैं इस वक्त इसलिए कहना चाहता हूं, हम जितना मिलके काम करेंगे उतना अच्छा है और कितना हम एक दूसरे को दूरी रखेंगे तो उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग, सस्पिशन, ये सब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आने वाले दिनों में इस पर सभी लोग गंभीरता से सोचकर एक होकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि इन भूमिकाओं में किसी तरह का अवरोध संसदीय संस्था को कमजोर करेगा। इस नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन सवालों पर आप गौर करें। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हाउस की सिटिंग्स और बढ़े और जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो। प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत दिन लंबा सेशन चलने से डिस्कशंस अच्छे होते हैं। कहीं इम्पोर्टेंट बिल को हम कम समय देते हैं और कहीं और भी अब चंद बिल को या चंद कार्यक्रम को हम 4 घंटे, 8 घंटे और चंद बिल को हम 2 दिन, 3 दिन देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको मौका दो, 2-4 दिन ज्यादा एक्सटेंड करें तो परवाह नहीं, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूमात होनी, ये है और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। ऐसा तो आप कम बैठते हैं, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा दिन हमको मौका मिला, हम लोग सभी मिलके आपको अच्छा बिल देंगे, स्टैंडिंग कमेटी का अच्छा रिपोर्ट देंगे, सारी चीजें भी हम करेंगे। तो ये मैं आपसे चाहता हूं कि पार्लियामेंट को ज्यादा दिन देने का मौका प्राइम मिनिस्टर हमको देंगे। गरीबों, कमजोर तबकों को, किसानों और मजदूरों के हित के मुद्दों पर ज्यादा बात हो सके। अक्सर जब हम ये मुद्दे उठाते हैं तो सत्ता दल इसे आलोचना मान लेता है और बिना सुने खंडन करने लगता है, जबकि सरकार को जनता की चिंताओं पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभापति जी, सीमित अवसरों में भी
जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है। और जबकि मेरा खुद का अनुभव है, मैंने आपको 2 लेटर लिखा, मेरी अनपार्लियामेंट्री शब्द उसमें कोई नहीं थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 शब्द आप अगर हटाएंगे वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग चले जाता है। तो इसीलिए आप इसको गंभीरता से लो, क्योंकि सडनली इसको हटाओ, उसको हटाओ, ये शब्द को हटाओ, ये सेंटेंस हटाओ, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान डिबेट का ही नहीं, आने वाले जो लोग हमारे प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे वो कहेंगे ये क्या अपोजिशन लीडर ने बात किया, जो मीनिंगलेस ये बात होती है। तो कम से कम मेरे को इस उम्र में वो सर्टिफिकेट तो मत दो जो मीनिंगलेस बात किया है। तो मैं ये चाहता हूं, और सभापति जी, सीमित अवसरों में भी जब सांसद अपनी महत्वपूर्ण बातें रखते हैं तो कई बार उन्हें कार्रवाई से हटा दिया जाता है, जबकि वे बातें असंसदीय नहीं होती। शब्द हटने से कही हुए बातों का अर्थ भी बिगड़ सकता है। मेरा मानना है कि समय समय पर राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स की समीक्षा आवश्यक है। यह विषय अभी जनरल पर्पस कमेटी के समक्ष विचाराधीन है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो वो आपके हाथ में है, आप ये कर सकते हैं। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर ठीक ठाक कर दिए तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है कि यहाँ आपको कोई, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो क्रिटिसिज्म होता है, आप भी मुझे कुछ बोलेंगे, मैं भी आपको कुछ बोलूंगा, ये डेमोक्रेसी का तरीका है। हाँ ठीक है, अगर हम गलत बोले तो कभी कभी हमको शर्मिंदा होना पड़ता, अरे ऐसी हमने गलत बातें बोली, ये ठीक नहीं है। लेकिन गलत को भी आप सच करने की बात सोचे तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप इस वक्त फिर एक बार ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर को आप देखेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। सभापति जी, समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। जो साथी दोबारा चुनकर आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं वे सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान जारी रखेंगे। यहाँ का अनुभव उन्हें सार्थक भूमिकाओं के लिए बेहतर सामर्थ्य देगा। एक शायर ने कहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि आप पहले 1-2 शायरी बोलते थे पार्लियामेंट में, तो अब वो छोड़ दिए आप, तो मैं बोलता हूँ, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस बातों के साथ मैं रिटायर हो रहे अपने साथियों को, उनको योगदान के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और हम सभी एक होकर भाईचारे से एक होकर देश के हित में काम करेंगे, ऐसा मेरे विचार आपके सामने रख के मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद। Now, Honorable Deputy Chairman जी। आदरणीय सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय सभापति जी, आपने मेरे प्रति जो सकारात्मक प्रेरक शब्द कहे वो मेरी स्मृति के स्थायी अंग होंगे। आदरणीय खड़गे जी ने जो उद्गार प्रोत्साहन मेरे लिए कहा वो अभी मेरे जीवन का अंग होगा। मैं सबसे पहले जो आज माननीय सदस्य रिटायर हो रहे हैं, जिनमें मैं भी हूं, जो आपने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
भावनाएं उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की, उनसे खुद को जोड़ता हूं। ये सभी माननीय सदस्य स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें, इनका उज्जवल भविष्य हो और देश को इसी तरह राह दिखाते रहें, ये कामना करता हूं। राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद अमूमन बसंत में 1/3 सदस्य विदा लेते हैं। व्यापक अनुभव ज्ञान से समृद्ध होकर देश के नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभाकर उतने ही सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और सपनों के साथ मुल्क की नई इबारत लिखने आते हैं। जैसे वसंत में पुरानी पत्तियों की जगह नई पत्तियां और कोपलें आती हैं, इसी तरह आने वाले सभी नए सदस्यों को भी हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले मेरे सार्वजनिक जीवन के जो भी मार्गदर्शक रहे उन सबके प्रति आभार। आदरणीय नीतीश जी हमें राज्यसभा में लाए, उनके प्रति आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहले टर्म में मैं इस महान सदन का उपसभापति बना। आपको जितना मेरे प्रति, आपके प्रति जो उद्गार है वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार और कृतज्ञता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरे मिलने के मौके बहुत कम होते हैं क्योंकि फंक्शनल रिश्ता सीधा नहीं है, पर जब भी मिला बहुत कुछ सीखा। उनकी चर्चा के केंद्र में हमेशा रहा सदन कैसे श्रेष्ठ ढंग से चले, दुनिया की आदर्श संसद कैसे बने, अन्य लोकतांत्रिक देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेज क्या हैं, क्या तकनीक के साथ वहां बदलाव हो रहे हैं, संसद को और जीवंत बनाए रखने और सिर्फ ये दिल्ली में स्थित केंद्र न रहे, संस्था न रहे, गांव-गांव तक युवाओं को, महिलाओं को कैसे आप लोग जोड़ सकते हैं। इस देशज सोच के अनुसार आप सोचें, आप लोग काम करें। इसलिए हमेशा उन्होंने पढ़ने के लिए, जानने के लिए प्रेरणा दी, इसके लिए भी आभार और कृतज्ञता। हमें उपसभापति बनाने में एनडीए घटक के सभी दलों ने पहल की। आदरणीय नीतीश जी की सक्रियता, आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन समेत एनडीए के सभी दलों को बहुत धन्यवाद। और उपसभापति बनने के बाद सभी दलों के सभी माननीय सदस्यों का स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन मिला। एक एक व्यक्ति के प्रति मेरा आभार। उपसभापति बना तब के चेयरमैन आदरणीय वेंकैया नायडू जी का मार्गदर्शन उनसे सीखा, उनके प्रति भी कृतज्ञता। और इस पद पर रहे सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता। और सर, आपके आने के बाद लगातार यह प्रयास रहा कि कैसे और बेहतर हम तरीके से संसद चलाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भूला नहीं जयराम जी, आदरणीय, यस, मैं उनका भी स्मरण किया। सभी इस सदन के माननीय सदस्य जेपी नड्डा जी का मर्यादित आचरण, शालीनता के साथ अपनी बातें रखना, सदन के एटिकेट्स और नियमों का पालन करना याद रहेगा। हमें सहयोग और हमारे लिए जीवन का अवसर है माननीय एलओपी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बैठने का सुअवसर, उनके प्रति आभार। सदन में हमेशा उनकी मौजूदगी, राजनीति का लंबा अनुभव और हर पल सजग रहना, यहां तक कि कोई सदस्य बोल रहा है, कोई शब्द छूट गए तो मुझसे पूछते। इसलिए आपसे बहुत सीखने का मौका मिला सर। आपका जो व्यापक अनुभव है उससे हमें जानने का भी अवसर मिला देश की राजनीति। संसदीय मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, बहुत सुंदर तरीके से हिंदी में तर्कपूर्ण और प्रेम से बातें रखना वो हमेशा सर मुझे याद रहेगा। संसदीय मामलों के ही राज्य मंत्री एल मुरुगन जी, उनकी भी भूमिका हमेशा हमें स्मरणीय रहेगी। सांसद बनकर आया तो उपसभापति थे पीजे कुरियन जी, उनसे भी सीखा सर। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा जी, आदरणीय शरद पवार जी, माननीय दिग्विजय जी और बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ रहे। ये सभी इनका योगदान और इनकी बातें हमेशा स्मृति में रहेंगी। लेकिन इसके साथ सभी दलों के फ्लोर लीडर्स, सभी चीफ व्हिप्स, मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, इनमें से एक एक व्यक्ति के प्रति मेरा सम्मान। मैं नाम लेता सबका एक एक का, पर समय को ध्यान में रखते हुए इसी के साथ सदन में बेहतर कामकाज संभव बनाने वाले सेक्रेटरिएट के सभी लोगों, मार्शल्स, अटेंडेंट्स को मेरा धन्यवाद। सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी जी की मदद, हर पल कठिन कामों को भी हंसते हंसते पूरा कराने की शैली याद रहेगी। साथ ही पोर्ट टर्मिनस के रूप में थोड़े बहुत जो स्टाफ मेरे साथ रहे, उनकी पल पल की तत्परता, उसने मेरे काम को संभव बनाया, उनको भी मैं याद करता हूं। सदन के हर सदस्य की खूबियां और विशिष्टताएं हैं जिनसे हमारा अनुभव संसार बहुत समृद्ध और आलोकित हुआ। शायद हम सदन के पहले उपसभापति हैं
जो लगातार सदन में आपके साथ बैठकर आपकी बातों को बहुत धैर्य से सुनते रहे, सदन में भी और चेयर पर भी। इसलिए आपने अच्छे श्रोता होने का संयम और धैर्य सिखाया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मृदुता सौम्यता से कठोर बात कह लेने की कला माननीय प्रमोद तिवारी जी में है, वह अविस्मरणीय। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, माननीय श्री त्रिचु शिवाजी, श्री घनश्याम तिवारी जी, डॉक्टर सस्मित पात्रा, अनेक मैं नाम लूं। भाई जॉन ब्रिटास जी जिससे नहीं होते तो संसद में उनकी अनुपस्थिति खलती है। उनकी मौजूदगी जीवंतता का एहसास कराती है। माननीय जयराम रमेश जी, हम यहां हो वहां हो पर उनका स्वर हमेशा सुनने को मिलता रहता, अविरत निरंतर। अनेक सदस्य जिन्हें मैं आज कहूं जो रिटायर हो रहे हैं, तो उनमें फौजिया खान जी, प्रियंका जी समेत सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधा मूर्ति जी जब बोलती हैं, पीछे हमारे बैठे होंगे भाई राम जी, हरीश वीरान जी, दादा सुखेंदु शेखर राय जी, रीता व्रत बनर्जी जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी, मयंक जी, गोविंद भाई समेत अनेक लोगों की खूबियों को मैं गिना सकता हूं, पर समय की मर्यादा है, इसलिए उनसे क्षमा के साथ आप में से एक एक व्यक्ति जिनकी खूबियों को जिनसे सुनकर सीखा उनके प्रति कृतज्ञता के साथ, पर उन्हें भी याद करूं। जब सर संसद में आया, जिनके प्रेरणा और प्रोत्साहन का, जिनको देख करके प्रेरणा मिली, माननीय अरुण जेटली जी, जिन्हें अपनी बात सुनाने के लिए आवाज ऊंचा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, माननीय गुलाम नबी आजाद जी, वो आनंद शर्मा जी, ऐसे अनेक सहृदय वरिष्ठ जन, उन सबको मैं सम्मान के साथ याद करता। सर, जिस गांव में पैदा हुआ, 6 महीने हम बाढ़ में पानी में रहा करते थे, वहीं जन्मना गुजर जाना हमारी नियति थी। हमारी दुनिया बहुत सीमित थी। वहां के अति सामान्य परिवार से यहां तक की हुई यात्रा में हमारे ही गांव के जयप्रकाश जी और उस क्षेत्र की रहनुमाई करने वाले आदरणीय चंद्रशेखर जी जैसे लोग भी प्रेरक रहे। इस सदन के कुछ अनुभव मैं आपको आज जरूर शेयर करना चाहूंगा। 2014 में इस सदन में आया, विपक्ष में था, तब नए सुधारों, प्रयोगों, डिजिटाइजेशन के आरंभ काल में हमारा मानस कैसा था। उस दौर में एक अति वरिष्ठ सदस्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता और नाम लेना मेरा मकसद है सर, पर मानस हम सबका कैसा था वो बताना चाहता हूं। वह डिजिटाइजेशन के प्रति संशय के सवाल उठा रहे थे। क्या गांव की हाट में लोग आलू टमाटर क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे? हाट में उस गरीब महिला के पास पीओएस मशीन होगी? क्या उसके पास बिजली कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है? और बहुत कठोर शब्द सर। यानी तब देश की फिजा में सार्वजनिक जीवन में यह उदासी नैराश्य था, यह कथन उसी का प्रतिबिंब था सर। पर सिर्फ 10 सालों में 1-2 गांव क्या पूरी अर्थव्यवस्था डिजिटल है। सिर्फ 1 महीने जनवरी में 2026 में 21 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन द्वारा 28 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है सर। आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कहा है। आज वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% इसी यूपीआई से होता है सर। ये आज 12 वर्षों बाद देश की फिजा में आस्था है और भारत के विकसित भविष्य के प्रति देश दुनिया के लोग गौर कर रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक तथ्य सर बता सकता हूं जो हमें बताते हैं कि हमारा सामर्थ्य आज कितना, हम क्या कर सकते हैं और कहां से कहां पहुंचे। सर मुझे याद है पहली बार विदेश गया था 1994 में पत्रकार के रूप में, तब भारत की पहचान धीरे धीरे बदलने लगी। लेकिन कहा जाता था कि साधु, सपेरों, जादूगरों और गरीबों का मुल्क है। एक नारायण मूर्ति जी ने किस तरह चीजों को बदला कि दुनिया में हमारी प्रतिभा की पहचान होने लगी और थॉमस फ्रीडमैन जैसे व्यक्ति को किताब लिखने पड़ी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। आज मैं सर सोचता हूं कि जो हमारी क्षमता और सामर्थ्य बढ़ रहा है उसमें 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप, 125 यूनिकार हैं। कल्पना करें कि जब नारायण मूर्ति जी के रास्ते पर उस रोल मॉडल के हजारों लाखों लोग आने वाले भारत में निकलेंगे, तब हम कहां खड़े होंगे। सर यहां रहते साक्षी बना कि 12 वर्षों में अनेक रिमार्केबल युगांतकारी विधेयक सदन ने पारित किया। मसलन दिवालिया कानून, बेनामी संपत्ति कानून, 3 तलाक कानून, जीएसटी कानून, धारा 370 का निरस्तीकरण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 1500 से अधिक पुराने कानूनों का निरस्त होना। जो करना चाहता था सदस्य के रूप में और कभी कभी कोशिश की, वो मेरी कामना है सर। जैसे हम सब सदन में और समितियों में प्रायः सुनते हैं कि इस क्षेत्र में बजट में एलोकेशन बहुत कम है, बड़े बड़े विकसित देशों में इतना एलोकेशन हो गया, पर शायद सर ये संसाधन कहां से आएंगे, इस पर भी गौर करना हमारा फर्ज है।
देश का बजट हमारी दृष्टि में एक परिवार के बजट जैसा ही है। आमद कैसे बढ़े यह सोचना परिवार के मुखिया की तरह देश की सर्वोच्च पंचायत में बैठे हम जैसे लोगों का भी दायित्व है। हमारा धर्म है कि समस्या के साथ हम समाधान बताएं। और ये सर मैं नहीं कह रहा, देश के पहले स्पीकर श्री जीवी मावलंकर जी ने 18 अप्रैल 50 को एस्टीमेट कमेटी में कहा, उसका मैं सार बता रहा हूं सर, वो कोट पढ़ने लायक है। हमारे संसदीय जीवन में रचनात्मकता के बजाय अक्सर विरोध की प्रवृत्ति हावी रही है। बिना गहराई के सोचे समझे हम सरकार के हर प्रस्ताव पर संदेह करते हैं, जबकि जरूरत है कि हम जिम्मेदारी साझा करते हुए समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसी सदन में सर मैंने सदन के पूर्व सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को 28 मार्च 2018 को एक मेंबर के रूप में फेयरवेल भाषण उनका सुना, वो मेरे मस्तिष्क में आज भी यादगार के रूप में मौजूद है। उन्होंने कहा, आई कोट, राष्ट्रीय हित के मुद्दों और राष्ट्रीय संकट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 30 मार्च 72 को ऐसे ही फेयरवेल स्पीच में कहा था, वो मैं कोट करता हूं सर। सो आई होप दैट इवन दो मेनी ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अपोजिशन पार्टी, they will give some thought to the tremendous problems which confront our country, the great challenge which we face in creating a new society, work together in spite of our differences, and even sometimes opposing points of view to create a better life for all of our people. सर जब मैं यहाँ आया, दीवारों पर हमारे बहुत अच्छी सूक्तियां लिखी हैं, रामायण महाभारत से लेकर अन्य ग्रंथों के सारा, उस पर एक तुलसीदास की चौपाई है सर। हम गांव में जब अपढ़ लोगों की संख्या ही ज्यादा थी, पर ये श्लोक मैंने वहां सुना था, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति दाना, ये यहाँ भी लिखा हुआ है सर। राष्ट्रीय सवालों पर हम आम सहमति बना सकें, क्योंकि देश है तब दल है तब हम हैं सर, ये मेरी कामना होगी। हमने संसद में जो बदलाव देखा सर, हमने अपने दौर में जब सांसद के रूप में काम शुरू किया सर, तो पेपर्स के पुलिंदा आते थे सर। आज डिजिटाइजेशन के कारण संसद की कार्यवाही लगभग पेपरलेस है, ये बड़ी उपलब्धि है सर। हमारा मानना है कि संसद के रूल्स को डिजिटल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा के अनुरूप बनाने के साथ साथ सदन को सुचारू रूप से चलाने में पैदा हो रही नई समस्याओं से भी हमें मिलकर निपटने की जरूरत है। एक निजी अनुभव और सर, जब मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर को पढ़ना शुरू किया सर, तो लगा कि पहले चेयर पे जो लोग होते थे वो हाउस को कंडक्ट करते थे, यानी किसी दल में होता था, कुछ लोग होते थे उनको दल भी समर्थन नहीं करते थे, जो एटिकेट्स को और नियमों को तोड़ते थे, उनके दल उनको समर्थन नहीं करते थे। आज स्थिति बदली है। पहले चेयर पर आने के बाद सदन को नियंत्रित करने के लिए अनुरोध करना पड़ता है, पहले कंडक्ट कराना पड़ता था क्योंकि लोग स्वतः रूल्स को फॉलो करते थे। आज पहले कंट्रोल करने की अपील करके कोशिश होती है, तब हम कंडक्ट करा पाते हैं। इस पर हम सबको मिलकर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। सर, हमारी संसद के इन हाउस प्रयासों के अलावा बीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता वाले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 में जैसी संस्थाओं ने संसद के कामकाज को आज के समय के अनुरूप प्रभावी बनाने की सिफारिश की। आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में 2000 में ओवरलैप ऑफ मैंडेट्स बिटवीन पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशें बड़ी महत्वपूर्ण है। विश्वास है कि यह सदन इन चीजों पर गौर करेगा। सर, यादगार पल रहा हमारे लिए पुराने संसद भवन में, जहां आजादी के इतिहास के बदलाव का वो साक्षी था। कोविड के दौरान कम समय में बने इस भव्य नए संसद इमारत में 47 तक विकसित भारत बनाने के नए सपनों, नए संकल्पों के साथ हम आए, यही यादगार रहेगा। सर, अंत में हमारे यहाँ बड़ा मशहूर शब्द है और बौद्ध धर्म के उद्गम से इसे हमने जाना, पर मैं जब इसको तहकीकात कर रहा था तो पाया चरैवती चरैवती, ये वैदिक परंपरा ऐत्रेय ब्राह्मण से निकला शब्द है। सर, कीप मूविंग, कीप वॉकिंग, मार्च ऑन, यानी जीवन में कभी न रुकने, थकने या विषम परिस्थितियों में निरंतर आगे बढ़ते रहने, कर्मशीलता की प्रेरणा इसी सदन से मिलती है। सदन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे सर। और भगवान बुद्ध कहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लगातार हम सक्रिय रहें, गतिशील रहें, सभी के कल्याण और सुख के लिए। इसलिए हम सब मिल करके हम जा रहे हैं जहां रहें और जो आ रहे हैं, और ये सदन आने वाले समय में भी इसी प्रेरणा से चरैवती चरैवती आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। धन्यवाद। आदरणीय खड़गे जी अपना विदाई भाषण में एक अपेक्षा व्यक्त की, तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कुछ अपेक्षा को पूरा करूं।
वैसे मैं शेर शायरी की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ, प्रतापगढ़ी का काम है। कर्म ऐसा करो अमन में, जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें, उधर से तुम्हें सलाम आए। Honorable members, as many party leaders and retiring members are willing to participate in the farewell speeches, if the House agrees, we may skip lunch hour today. I also request that all the speeches be kept brief and completed within 3 minutes each. Now, Sriman H.D. Devegowda ji, Sriman Derek O'Brien ji. Sir, to all the members on the treasury benches and in the opposition benches who are moving on in the next few days and weeks to new jobs and new roles and new ways to make their political lives meaningful, on behalf of the chairperson of the All India Trinamool Congress Parliamentary Party and the chairperson of the All India Trinamool Congress, Ms. Mamta Banerjee, I wish them the very best and greetings to each one of you. Sir, we will keep these speeches short because today is the day not for the floor leaders, it's for the day for those who are leaving. Give them all the time you want. One, many of the MPs retiring today have set a record. I want to congratulate them for that. What is the record? They have been here for 6 years, but I think they are the only MPs who've been here for 6 years since 1950 and have worked under 3 chairmen. Mr. Venkaiah Naidu, Mr. Dhankar, and now Sir you. So in 6 years, they've had this triple opportunity. Sir, there are many seniors today who were mentioned, and I wish them very, very well. If I leave somebody's name out, it's not deliberate, like my colleague, senior, Mr. Subroto Bokshi, who's been with our party right from day one. He wouldn't come to Parliament. We wish him a speedy and healthy recovery. Mr. Subroto Bokshi from the Trinamool Congress. There are so many else I want to mention. Many are coming back, but some people, seniors, have even opted out, like the Venerable Mr. Digvijay Singh, who is always full of enthu. Sir, but today, as we celebrate the experience of the septuagenarians and the octogenarians, I want to celebrate the contributions made by the young parliamentarians in Rajya Sabha, who are not even retiring. They're not retiring. They are merely having a job transfer to some other role in the party. And you can't retire because they are all in their 30s and 40s or early 50s. Look at, from my party, Ritobroto Banerjee. He's supposed to retire on April 2, but he's already taken a new job for this morning. He's 40, early 40s. He's fighting an assembly seat, not fighting, sorry. He's about to win an assembly seat, which will be announced on the 4th of May. A great, and he was a comrade at one time. So Trinamool is an open place. He was a SFI National General Secretary. He's been with us. And he's also had the pleasure, like so many MPs, of being in the parliament, like the parliament. And some cynics say this is also the parliament, even though it looks like a convention center, but this is our parliament. Sir, more youth from different parties. A very low-profile MP who I had the pleasure of working with in the criminal code. Very quiet, very efficient. You don't see him on television cameras. No, sir, he's not from Trinamool. He is Ilango from DMK.
Sir, he is a very, very effective parliamentarian. There are so many other young parliamentarians in their 30s and 40s. Miss Priyanka Chaturvedi, who has made an impact in parliament. And of course, from my party, one of the finest resources we have in All India Trinamool Congress, and we have so many things planned for him, is Saket Gokhale. Sir, I wish all the MPs very, very well. The average age of the Rajya Sabha is about 61, 62. While we respect all the experience of the seniors, we are working very hard in Trinamool Congress because we are the second largest opposition party now in Parliament, in Rajya Sabha, with our MPs, younger ideas. So we have a beautiful mix of experience with youth. Thank you, sir, for this opportunity. And thank you very, very much. Jai Hind, Jai Bangla. Trichy Shivaji. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, as you rightly pointed out in your opening remarks, it is not the end of the road, but only the bend of the road for the retiring members. I'm also in the list, but since I'm re-elected, I am speaking here in the capacity of a floor leader, for I have to bid farewell to many of my colleagues who have been with me and whom I will miss in the coming days. Sir, an English poem says that we meet, we know, we love, only to part. So parting is an inevitable part in our life. In what way? During when is the only question. As rightly many of my colleagues pointed out here, they are sure to continue their contribution in another area of politics or in public life. So we wish them good, sir. Sir, we miss very much. We will miss very much. First of all, Dr. Harivansh Singh, the Deputy Chairman, who has contributed very significantly, was very kind. And he was not only be in the chair and conducting the House, but he used to listen the speeches and used to appreciate after that, calling us in his chamber. And he has always admired. And he has never missed any occasion, for which I have called him, and he has graced the occasion. Personally, I got a very great respect. I miss him. We will miss him very much here in the House. And leader of opposition, sir, he spoke here, but we are sure that he will come back here. So I think we did not bid farewell. We can say, sir, as a senior leader in the country, not only in the Parliament, we have our respect for you, and your guidance and your speech has always contributed a lot. And Mr. Digvijay Singh had been two-time Chief Minister, whom I fondly call as Maharaj, my very favorite one here in the House. He is also retiring, which I think I cannot bear in the coming days. If I look back, if he is not there, I'll feel very bad, sir. And one respectable leader in our state, we all know, Mr. G.K. Vasan. And he may be in any party, he may be with any alliance, but he holds a very respectable position in our heart and everyone. And my 30-year-long friend is Rajini Patil. From 96 onwards, we are traveling together from the Lok Sabha, and equally is Bhuneshwar Kalita. He is from the treasury benches, she is in the opposition. Both of them are very close to me. I cannot weigh who is more, who is less. We will miss them here. And KTS Tulsi, the senior most lawyer in the country, one of the very reputed legal luminaries. My close circle is, we had a core group in which he was with us, and Miss Sonal Mansingh was also here. She's not here. So he is also not so well as he was before. We will miss him. And Neeraj Dangi, my family friend, and Shakti Singh Gohil, and my neighbor, Mr. Premchand Gupta, whom I expected to continue because he is also a long-term friend here in the Parliament, and his contributions, very cool man. He has got another sphere of life in which he is very successful. He can concentrate on that, but the Parliament will miss him. So also Mr. Jangra, the great singer,
from the ruling party, Ms. Goswami, and Dr. Karath, my good friend, will all not be here. And Priyanka Chaturvedi, we know her contribution and her presence in the House very much. She participates in every debate. And Saket Gokhale and Rita Barata Banerjee, as Mr. Derek O'Brien, they also made significant remarks. And Dr. Fauzia Khan, who came later but participated in everything and zero hour, all very, very important issues. And my very close friend and brother, Ayodhya Rami Reddy and Netaji Subhash Chandra Bose Pilli. See, Ayodhya Rama Reddy is such a nice person. As I said, like Prem Chand Gupta, he has another sphere, he's a successful business person. But he loves the parliament and he has also made his marks here. And Suresh Reddy from Telangana, all these things. And so also, sir, as far as my party is concerned, I would like to recall Mr. Shanmugam, the great trade union leader, and my beloved brother Abdullah, who have retired earlier this year. And now, who will be retiring in April 2nd, will be N.R. Ilango and Dr. Kanimodi, N.V.N. Somu. Both are my lieutenants. I'll miss them personally very much in this house. Whenever I want to do something in this house, they act to the party's ideologies and also keeping the decorum of the house, and they have contributed very significantly. As rightly said, Mr. Yelango was appreciated by Home Minister himself when the three legal criminal laws were amended. His contribution was very much appreciable. He personally thanked him, and is one of the assets of our party. And Dr. Kanimodi Somu, our grandfather is a senior, he's also founder of our party, and her father was a union minister who died in a chopper crash. And she has been here, and she will be there in state politics. We wish her, sir. And so, as I say again, we will miss them here. This is not a building of bricks and mortar. It is an institution. It will be continuing. Men may come and men may go. Like the river goes, this house will be functioning. After you have come, sir, we feel very much that one person from our state has come, and we feel a cordiality, and you also helped the members. I should thank on this occasion. And making use of this opportunity, I wish to thank my leader and my Deputy Chief Minister, M.K. Stalin, Udayan Stalin, for having enabled me to come here and contribute on behalf of the DMK party here, sir. So whichever name I have missed by way of the constraint of time, I seek an excuse from them. Mr. Ramdas is coming back, so I don't need to mention about him. So I request, out of sight is not out of mind. You will always be in our mind. All those inscriptions you have made in our heart and mind will continue. Our relationship will be here, but only this hall will miss the echo of your voice and your contributions, but it will be in some part of the country in the nation's interest. So I wish everyone a very bright success in their future endeavors and thank them on behalf of the DMK party. Thank you very much. श्रीमान संजय सिंह जी। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस विदाई भाषण पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, विदा करना किसी को हमेशा बहुत ही पीड़ादायक और भावनात्मक पल होता है। चाहे आप बचपन के दोस्तों से अलग होके कॉलेज में जाएं, चाहे बाप बेटी को विदा करें, और चाहे संसद के हमारे मित्र सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जब इनके अलग होने का, विदा होने का मौका आता है, मन बहुत भावुक होता है और निश्चित रूप से उनके साथ बिताए गए तमाम खट्टे मीठे अनुभव याद आते हैं और वो सदा के लिए रिश्ते को जीवित रखते हैं। मान्यवर, हमारे बीच से आज जो साथी इस सदन से विदा हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जीवन में बाकी भूमिकाओं में अपना योगदान नहीं देंगे। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जिस भी भूमिका में उनको उनका दल जिम्मेदारी देगा या दल से अतिरिक्त भी जो समाज सेवा के कार्य वो कर रहे होंगे, अनुकरणीय काम वो करेंगे,
ईश्वर से मेरी ऐसी शुभकामना है, ऐसी प्रार्थना है उनके उज्जवल भविष्य के लिए मान्यवर हमारे बीच से। और ऐसे भी बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ कमेटीज में काम करने का मौका मिला। मान्यवर ये बात भी है कि जब हम लोग कमेटीज में काम करते हैं तो वहां दल की ये जो दूरी है वो कम रहती है, ज्यादा मिलना होता है, अच्छे से एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है और जो गलतफहमियां रहती हैं वो कई बार बहुत दूर होती हैं। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो उधर भी हैं और इधर भी हैं, उनसे बड़े अच्छे और गहरे रिश्ते रहे इन 6 वर्षों में। दिग्विजय सिंह जी जो रिटायर हो रहे हैं सदन से, शक्ति सिंह गोविल जी, साकेत गोखले जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, फौजिया जी, नीरज डांगी जी, एलंगो जी, रामचंद्र जी और अयोध्या राम रेड्डी जी, रितोव्रत बनर्जी जी, रजनी पाटिल जी, कलिता जी, मुन्ना भाई हमारे वो भी हमारे साथ कमेटी में रहे, अंजू बाला जी, सुमेर सिंह जी, हमारे प्रेमचंद गुप्ता जी, आदरणीय प्रेमचंद गुप्ता जी, सुरेश रेड्डी जी, संगमम जी, अब्दुल्ला जी, सीमा द्विवेदी जी जो हमारे जौनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से, राम जी, मैं इन सबको और जो भी और बाकी सदस्य जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं उनके लिए उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं करने के साथ साथ मान्यवर आपसे एक विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं, एक अनुरोध करना चाहता हूं। मान्यवर सभापति जी कृपा करके एक 30 सेकंड की गुजारिश है सर आपसे। चेयर सर एक 30 सेकंड की गुजारिश है सर आपसे। सॉरी सर ये साथी जो आज रिटायर हो रहे हैं, पहले ये व्यवस्था थी कि जो भी हमारे सदन से रिटायर होते थे लोग, उनको इस दरवाजे के बाहर तक आने की इजाजत थी सर। उनसे हम लोगों का मिलना जुलना हो पाता था, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर पाते थे। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं इनके लिए भी ये बंदिशें समाप्त की जाए। पहले जैसे हमारे एमपीज एक्स एमपीज आ पाते थे वैसे ही उनके आने की व्यवस्था कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और अंत में मैं आदरणीय हरवंश जी का बहुत आभारी हूं और इस बीच कभी उनसे कई बार बातचीत में मैं थोड़ा ज्यादा तेजी से बोलने की आदत है, तो उनसे कोई तलखी हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सुभाष चंद्र बोस पिल्ली जी। Thank you, Chairman ji. Please permit me to speak in Telugu language, sir. గౌరవ అధ్యక్షుల వారికి అదేవిధంగా మరి సభలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులందరికీ కూడా ఈ మరి త్వరలో రిటైర్ కాబోతున్నటువంటి నా మిత్రులకు పెద్దలకు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, ఈరోజు ఇద్దరు నా జీవితంలో నన్ను రాజకీయంగా ప్రోత్సహించినటువంటి ఇద్దరు మహా వ్యక్తుల్ని ఒకసారి స్మరించుకోవాల్సినటువంటి సమయం సందర్భం కూడా. ఒకటి స్వర్గీయ శ్రీ రాయవరం మునసబు గారని, విచ్ ఇస్ వెటరన్ కాంగ్రెస్ లీడర్ and a very close associate to our ex-chief minister బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారు వారికి, అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు మా ప్రీతమ నాయకులు డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఇద్దరికి ఒకసారి స్మరించుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలియజేయవలసిన సమయం సందర్భం. అధ్యక్ష, ఇక్కడ కులాల ప్రస్తావన చేయకూడదు కానీ I belongs to Settibalja community which is categorized as OBC category. ఈ 75 సంవత్సరాల్లో మొట్టమొదటి ఉన్న అధ్యక్ష, ఐ స్టెప్ ఇన్ పార్లమెంట్ విత్ ద కైండ్ గ్రేస్ ఆఫ్ అవర్ లీడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండ్ విత్ గ్రేట్ఫుల్ సపోర్ట్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. వారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో మా కమ్యూనిటీ నుంచి మొట్టమొదటి వ్యక్తి అధ్యక్ష నేను పార్లమెంట్ మెట్లు ఎక్కిన వాడిని. వారికి నా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకా అధ్యక్ష, ఇది ఒక పవిత్రమైనటువంటి ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం. ఈ దేవాలయంలో చేసిన చట్టాలు
మన కళ్ళ ముందు నాశనం అయిపోతుంటే, మన కళ్ళ ముందు తూట్లు పడుతూ ఉంటే మనం ఏమీ చేయలేని దుస్థితిలో ఉన్నాం. కాబట్టి ఒకసారి ప్రభుత్వానికి తమ ద్వారా వారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాలని ఇవాళ తమరిచ్చిన అవకాశాన్ని నేను సద్వినియోగం చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. ఒకటి, ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం. ఈ ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టంలో డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఎవరి మీద పెట్టారు అధ్యక్ష? తీర్పు చెప్పాల్సింది శాసన సభాపతిగా కానీ పార్లమెంట్ స్పీకర్ గారు కానీ తమకు కానీ ఉన్నాయి అధికారం. ఒక పొలిటీషియన్ని తీసుకొచ్చి న్యాయస్థానంలో న్యాయాధిపతిగా కూర్చోబెడితే ఏం న్యాయం జరుగుతుంది అధ్యక్ష? ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం ఒక పవిత్రమైన ఆశయంతో, పవిత్రమైన లక్ష్యంతో పెట్టిన చట్టం. ఆ చట్టాన్ని ద్రోహం చేసేస్తూ ఉంటే మన కళ్ళ ముందు ఏ పార్టీ నుంచి అయితే ఎలక్ట్ అవుతూ ఉన్నారు వారు మధ్యలో రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవటం కానీ, లేదా మరో పార్టీ నుంచి గెలవటం కానీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ఏమీ చేయలేకపోతున్నాం అధ్యక్ష. ఇంకెక్కడ గౌరవం పెరుగుతుంది? ఇంకెక్కడ ప్రజాస్వామ్యం విశ్వాసం పెరుగుతుంది? ఈ చట్టసభలు అంటే ఎందుకు మనకి విశ్వాసం పెరుగుతుంది మన మీద? అంచేత పూర్తిగా అపనమ్మకం వస్తుంది అధ్యక్ష. పార్లమెంట్ చేసే చట్టాలు ఇవెందుకు పనికిరావు అనే పరిస్థితి వస్తుంది అధ్యక్ష. దయచేసి గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ఆలోచించారు. అటువంటి ఎవరైనా పార్టీ డిఫెక్ట్ అవుతే, పార్టీ డిఫెక్ట్ నుంచి వెళ్ళిపోతే వారు కనీసం ఆ టర్మ్ వరకు కూడా వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా. అటువంటిప్పుడే ఆ చట్టం చేయటంలో ఉన్నటువంటి పవిత్రమైన లక్ష్యం నెరవేరుతుంది తప్ప లేకపోతే ఆ లక్ష్యం నెరవేరదు అధ్యక్ష. అర్జెంటుగా స్పీకర్ గారిని జడ్జి స్థానంలో తీసి హైకోర్టుకి అప్పచెప్పాలి అధ్యక్ష. అది చెప్తే న్యాయం జరుగుతుంది. దానికి ఒక టైం ఫిక్స్ అయ్యాలి. 6 నెలలు 3 నెలల టైం ఫిక్స్ చేస్తే అప్పుడు ఏ పవిత్రమైన ఉద్దేశంతో, ఏ పవిత్రమైన లక్ష్యంతో ఆ చట్టం చేశారో ఆ చట్టం మరి ఉపయోగపడుతుంది అధ్యక్ష. ప్రజాస్వామ్యం మీద విశ్వాసం పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, రెండో చట్టం ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్. సాక్షాత్ పార్లమెంట్ చేసిన చట్టం అది. గౌరవ ప్రధానమంత్రి ఆ రోజు మన్మోహన్ సింగ్ గారు చేసిన చట్టం అది. మరి ఆ చట్టం ఉండగా రాష్ట్రాల్లో పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందంటే చాలా జీవోలు హైట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది అధ్యక్ష? ఇంకెందుకు ఆ చట్టం? పార్లమెంట్ చట్టాన్ని శాసనసభలు తిరస్కరిస్తున్నాయి. దాన్ని చూస్తూ అంటే ఎక్కడ దాపరికం ఉందో అక్కడ అవినీతి అయినా ఉంటుంది, లేక బంధుప్రీతి అయినా ఉంటుంది, లేదా తన వర్గాన్ని కాపాడుకోవాలనే లక్ష్యమైనా ఉంటుంది, ఏదో ఉంటుంది అధ్యక్ష దాంట్లో. మరి మనం కూడా చూస్తూ ఊరుకుని దానికి దోహదపడుతూ ఉంటే ఇంకెందుకు ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఎందుకు? పార్లమెంట్ చట్టాలు చేయటం ఎందుకు? ఆ చట్టాలకు విలువ లేనప్పుడు ఎలా విశ్వాసం పెరుగుతుంది ప్రజలకి? దయచేసి ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రభుత్వం ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. కనీసం 2 చట్టాలని తమ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకెక్కడ న్యాయం జరుగుతుంది? ఎక్కడ మనం చేసే చట్టాలకి ఎక్కడ గౌరవం పెరుగుతుంది? ఎక్కడ విశ్వాసం పెరుగుతుంది చెప్పండి? అందుకే కనీసం మన చేతిలో ఉన్నది దీన్ని సవరించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఒకవేళ చేయలేము మనం రద్దు చేసేయడం బెటర్. చట్టాలు ఉన్నప్పుడు, చట్టాలు ఉండి కూడా మనం ఏమీ చేయలేకుండా కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ ఊరుకోవడం తప్ప ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఇంకా ప్రధానమంత్రి గారి పోస్ట్ ఎందుకు, స్పీకర్ గారి పోస్ట్ ఎందుకు, రాష్ట్రపతి గారి పోస్ట్ ఎందుకు? ఇవన్నీ వేస్ట్ అధ్యక్ష. మనం చేసిన చట్టాలని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేని దుస్థితి ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఉపయోగం లేకుండా పోతే నేను దయచేసి నన్ను మన్నించండి అధ్యక్ష. ఈ కొద్ది కాలంలో నేను చూసింది ఏంటంటే మనం చేసిన చట్టాలకే మన నాయకులే గౌరవం ఉన్నప్పుడు ఇంకెందుకు ఈ చట్టాలు? ఏంటి ఉపయోగం? తప్పకుండా దీన్ని అరికట్టవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రజాస్వామ్యం మీద విశ్వాసం పెరగాలంటే ఖచ్చితంగా దీన్ని అరికట్టవలసిన అవసరం ఉంది అని నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకా ఇటువంటి చెప్పవలసుకుంటే చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దయచేసి ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి అధ్యక్ష. నేను మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చాలా నా స్నేహితుల దగ్గర చాలా మంచిగా చెప్పినట్టు ఈ సభలో ఇద్దరు మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఇద్దరు ఉన్నారు. ఒకరు మన్మోహన్ సింగ్ గారు, దేవగౌడ గారు. వారిద్దరు మాజీ ప్రధానమంత్రులు. వారి సరసన కూర్చోబెట్టే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. నా మిత్రులు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను అధ్యక్ష. ఇంకా చాలా మంది మహనీయులు ఉన్నారు అధ్యక్ష. అందరం మనం చేసిన చట్టాలు మన కళ్ళ ముందే నాశనం అయిపోతూ ఉంటాయి. మన కళ్ళ ముందే తుట్లు కింద చంపేస్తుంటే మనం చూస్తూ ఊరుకోవడం తప్ప ఏమీ చేయలేని దుస్థితిలో ఉంది. అందుక అధ్యక్ష మనకి పార్లమెంట్లో కూర్చోవడం,
అందుకు అధ్యక్ష ఉన్నత పదవుల్లో మనందరం కూర్చోవటం, అందుకు అధ్యక్ష మనల్ని ప్రజలు ఇక్కడికి పంపించడం, ఏ ఆశయాలతో మనం చట్టాలు చేస్తున్నాం, ఏ లక్ష్యాలను సాధించవలసిన ఆ లక్ష్యాలు ఏమిటి, ఆ లక్ష్యాలు నెరవేరకుండా చేసేస్తూ ఉంటే మరి దానివల్ల ఉపయోగం లేకుండా పోతుంది అధ్యక్ష. ప్రజాస్వామ్యం మీద ప్రజాస్వామ్యం అంతరించిపోతుంది అధ్యక్ష. ఇటువంటి వాటికి మనం తెలియకుండా మనం ప్రోత్సహించిన ప్రజాస్వామ్యం అంతరించిపోతుంది. కాబట్టి దయచేసి అటువంటి జరగకుండా చూడవలసినటువంటి ప్రధాన బాధ్యత ఉంది అధ్యక్ష. మా సహచర ఫ్లోర్ లీడర్లు అందరూ కూడా మరి ఎల్ఓపి గారు కానివ్వండి, ఖర్గే గారు, మరి తిరుచి శివ గారు కానివ్వండి, లేదా నాకు ఎప్పుడు నిరంతరం మంచి సలహాలు ఇస్తుండే నా పక్కనే కూర్చున్నటువంటి డాక్టర్ సుస్మిత్ పాత్ర గారు కానివ్వండి, మరి ఇంకా ఇతర లీడర్లందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. ఇది నాకు ఈ 3 నిమిషాల్లోనే నాకు తమరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని, నాలో ఉన్నటువంటి బాధ, నేను గ్రహించినటువంటి 2-3 విషయాల్ని తమ దృష్టికి తీసుకొచ్చినందుకు మరి మన్నించండి. నేను ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడుతుంటే మన్నించమని కోరుతూ, నేను కోరుకునేది మాతో పాటుగా రిటైర్ అయిపోతున్నటువంటి అందరూ కూడా మరలా తిరిగి సభలో చూడాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. వారందరూ తిరిగి ఎలక్ట్ కావాలని మరి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు. Dr. Susmit Patra ji. Honorable Chairman, sir, on behalf of our Honorable President of Biju Janata Dal, Shri Naveen Patnaik ji, and the BJD Parliamentary Party, I wish the very best to all our retiring members. And I'll also seek a small indulgence from you before I start. I usually try to keep it brief, but please indulge me for a few minutes if you can. Honorable Chairman, sir, there are many days in this House when we rise to debate, but today I rise to say thank you. To say thank you to all our dear colleagues whom we bid farewell, who have shared this journey with us in this Rajya Sabha. And moments like this remind us of something very important, that beyond the arguments and the political divisions, there is a deeper bond among all of us, and that deeper bond is a bond of service. Every member who walks into this chamber carries with him something precious. Not power, not privilege, but service. The trust of millions of people outside who cannot walk through these gates. The hopes and struggles of millions whose voice they hope will find resonance through these members. The members who we bid farewell to today carried that trust with dignity. They spoke about their states. They spoke about their people. They spoke about their problems, and they devoted their lives to the service of this nation. And for that, they deserve our gratitude. Some colleagues will return to these benches. I wish them well, and I look forward to working with them. Honorable Chairman, sir, at the outset, I'd like to recognize 2 colleagues from my party who are bidding farewell on the 2nd of April. Shri Mujibullah Khan ji and Shri Niranjan BC ji. I had the privilege of working very closely with them, and I remember them not because of what they spoke, but I remember them for the sincerity, devotion, and dedication with what they did. Shri Mujibullah Khan ji, right across his entire term in this House, had a deep concern for the people, not only of Odisha, but across India. He spoke for the underprivileged. He spoke for the minorities. He spoke for the poor. When he rose to speak, one could sense he was not speaking merely as a parliamentarian. He was speaking as a representative who carried the anxieties, aspirations, and quiet hopes of people who have sent him here. Shri Niranjan BC ji brought to this chamber a voice that was calm but deeply purposeful. He spoke for the marginalized, for the tribal communities, for the weaker sections of society that have long waited for resonance. He did so with dignity, without anger, without spectacle, but with conviction. That is the kind of service that does not go unnoticed. Honorable Chairman, sir, at this moment, I recognize Shri Harivansh ji,
Honorable Deputy Chairman of our House. I learned so much from him. Every time that he was on the chair and off the chair, his thoughts, his ideas, his vision, and his depth of understanding made me richer in my experiences as a parliamentarian. And I always refer to in person that he's an elder brother, so I'm breaking protocol by referring to that, sir. We will miss you, but I'm very hopeful you'll come back. The debates we were part of, the friendships we built, the responsibilities we shared does not end with a term. We do not just say farewell. We thank them for their service. We thank them for their sincerity, for the years they devoted to strengthening this house. I had some very personal reflections and experiences with many members who are retiring. Sri Ranjan Gogoiji, who was a former Chief Justice, we used to talk on the corridors and in the lobbies relating to law. Sri Ramdas Athavleji, his inimitable poetry. Srimati Priyanka Chaturvedi ji was so powerful in her oratory, and I learned so much from her in this house and outside. Dr. Bhagwat Karad ji, when he was MS Finance, the way he has helped a lot of the issues. Dr. Fauzia Khan ji and her oration and a distinction that she added with a very calm and peaceful demeanor. Shri Dhareshil Mohan Patil ji, Srimati Rajni Ashok Rao Patil ji, we used to famously call her as Tai, and we'll deeply miss her. Shri Sharad Pawar ji, he is returning back to the house, but his wisdom and his statesmanship has always inspired us. From our state, Shri Niranjan Bishi ji and Shri Mujibullah Khan ji, I just spoke of them. Shri Sujit Kumar ji, Srimati Mamta Mohanto ji, Shri N.R. Elango ji, his depth of understanding in law, Shri Selva Rasu ji, my Anna, Shri Tiruchi Anna. He's my Anna, I am his Babu. That is how the relationship is between both of us. He's returning back. Dr. Kadimodi Envian Somu ji, I have been very inspired by the way, the diction and the way she has taken things forward. It has been an experience always listening to her every time. Dr. Thambi Dureji, my other Anna. So there are two Annas that I have in the front row. And he has been someone who's always told me, I bowed out, I can't take the name now. But from 1984, how he has performed and what has been the legacy I've learned from him. Sri G.K. Vasanji, extremely warm, considerate. I learned a lot. My friends from West Bengal, Sri Subhota Bakshi ji, he used to come in frequently, but whenever he did, I tried to better my Bengali with him. Sri Dr. Banerjee ji, his erudition, I used to say, is that when you speak about Rabindranath Tagore, when you speak about the Bengal culture, I learned so much from you. Sri Bikash Ranjan Bhattacharya ji, the legal eagle. Sri Saket Gokhale ji, the firebrand, I would always say. Tremendously powerful, very passionate. I learned passion from him. Sri Ajit Kumar Bhuiya ji, who was very soft-spoken, but very sharp in his thought. Sri Bhuvneshwar Kalita ji, I had a tremendous love and affection. We had a long relationship and have always learned so much from him. Sri Rameshwar Teli ji, when he was minister, as well as when he wasn't, it was always a pleasure meeting him. Sri Premchand Gupta ji, I consider him as an elder brother. His affectionate handshake and the way he would pull me towards himself and make me sit down and help me understand the nuances of politics, I will miss, but I really hope you come back, sir, very soon. Aapke bina ye adhura hai yahan pe, ye bench. Sri Harivansh ji, I just spoke about him. Shri Upendra Kushwaha ji, on and off on the committees we used to meet, but a person so powerfully thoughtful for Bihar. Shri A.D. Singh ji, again a very good friend. Shri Ramnath Thakur ji, of course, Thakur Sahab has always been a great friend and he's returned back, so welcome back again, sir. Chhattisgarh, Shri Tulsi ji, sorry sir, I just said you'll have to indulge me for a minute. Shri KTS Tulsi ji, I had the good fortune of traveling with him to UNGA and with his wonderful wife, the way they treated me to the breakfast table and the wonderful conversations we had, will always remember. My sister Pulo Devi Netam ji, one of the most soft-spoken people that I've met in this house, and I'm so glad that she's returning back. Shrimati Kiran Chaudhary ji, I had the fortune of going to IPU with her, learned so much from her diction and her understanding. Shri Ramchandra Jangra ji, his beautiful songs serve as something that really has embraced me, and we really miss you, and we hope you come back soon.
Ms. Indubala Goswami ji, I start with an apology. As the chairman of the House Committee, we have troubled her enormously. But as an elder sister, as a younger sister, whichever way we look at it, she has always been very forthcoming and helpful. Shri K.R. Suresh Reddy ji, as the former speaker in the State Assembly and here, it has always been a privilege to learn from him the nuances of being whenever I was there on the chair. Dr. Abhishek Manu Singhvi ji, as the legal. Shri Ayodhya Rami Reddy Allah ji, another good friend, many conversations, and his heart for democracy was always there, and used to say. Sana Satish Babu ji, very soft-spoken, very erudite. Shri Parimal Nathwani ji, great conversations. And my benchmate, Shri Subhash Chandra Bose Pilli ji, one of the most affectionate person. Many times he would speak in Telugu and I couldn't understand. Many times I would try to speak in my Hindi, he couldn't, but we understood each other for the time that we spent here through the love and affection that he had for me and I have for him, sir. In fact, with you gone, this bench will become empty. Every time I come here, I'll remember you, sir. Narhari Amin ji, I remember once, and today when we are in the photo session, sir, I remembered him again. The last photo session, suddenly because of the heat, he was unwell. And I remember he was standing right next to me. So Narhari Amin ji, and together we were once in a soup on a privilege that happened in the other house, that's for another purpose, but we remember him. My elder sister, Ramila Ben Bichar Bhai Baraji, yesterday she was speaking right there, she's there. And it's always a pleasure listening to her. Shakti Singh Gohil ji, the tiger, we'll remember you, sir. It's always a privilege. Bokaria Ram Bhai ji, it's always a privilege, sir, to listening to you. Thank you so much. And your little dibbi, when you used to kill those little things. Ram Bhai, वो डिब्बी कहाँ है? है आपके पास? है ना? बस आप रखे रहो, मैं आता हूँ आपके पास. So he used to take that small packet with a little bit of long and elaichi and would share it along. Deepak Prakash ji and Jharkhand and our conversations. George Kurian ji, whenever I met him as a minister. Digvijay Singh ji, a legend. The way he used to discuss about governance, about policy, and especially the way he would take things as the ideological perspective were some things I really learned from you, sir. Without you in this house, we'll be poorer for your absence. I thank you so much, sir. Dr. Sumer Singh Solanki ji, young, dynamic professional, had the privilege of going to IPU, and the way he thinks about the tribal communities in Madhya Pradesh has been something that has inspired. Maharaja Sanojoba Leishamba ji, Dr. Venroy Karluki ji, Sri Neeraj Dangi ji and his erudition and oration, tremendously powerful. Sri Rajendra Gehlot ji, the senior statesman. Sri Ravneet Singh ji, I met him a couple of times as minister. Nabam Rebia ji, of course, a former prime minister. Dr. H.D. Devagowda ji and his affection. Sri Irana Kadari ji, Sri Mallikarjun Kharge ji, our LOP, learned lots from him. Sri Narayan Koragappa ji and Sri K. Vanlal Veena ji. Thank you, sir, for indulging me for such a time, but everyone in their own ways, through handshakes with the love and affection and the suggestions that they made, have made us richer. And when they are not here today, tomorrow and day after, we'll remember them, but these conversations will strengthen us to continue building this institution of democracy. I thank you, sir. Now I invite my old friend, Sriman Prem Chand Gupta ji. थैंक यू श्रीमान जी, आपने मुझे आज इस विदाई समारोह पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। मान्यवर, राज्यसभा एक ऑनगोइंग हाउस है, इसमें हर 2 साल में 1/3 हाउस रिटायर होता है और नए लोग आते हैं। श्रीमान जी, मैं 30 साल से इस हाउस में मुझे बैठने का मौका मिला। इसके लिए मैं मेरे नेता माननीय लालू प्रसाद जी का और युवा नेता तेजस्वी प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और श्रीमान जी, मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने कभी भी राजनीति के बारे में नहीं सोचा था। मैं विदेश में रहता था, वहाँ पर बिजनेस था, परिवार था, घर था।
माननीय लालू प्रसाद जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि अब बहुत हो गया और आकर इधर अपने मेरे साथ जुड़कर देश की सेवा में आप योगदान दें। मैं 96 में फिर 1996 में मैं वापस आया और इस नई दुनिया में मुझे आने का मौका मिला। श्रीमान जी, दोनों प्रोफेशन, दोनों दुनिया एकदम अलग थी। यहाँ आकर मुझे अलग अलग साथियों से मिलने का मौका मिला। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। अपने कैरियर में जो ल्यूमिनरी होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। श्रीमान जी, 1996 के बाद मुझे आपके साथ भी फाइनेंस कमेटी में बैठने का मौका मिला था और मेरा सौभाग्य था कि आपके साथ बहुत कुछ सीखने का चांस मिला था मुझे। मान्यवर, इस 30 साल के सफर में बहुत उतार चढ़ाव मैंने इस ऑगस्ट हाउस में देखे। जो पुरानी राज्यसभा में जब बैठते थे एक अलग माहौल होता था, एक अलग फीलिंग थी। सेंट्रल हॉल में बैठते थे, सब लोग आपस में बात करते थे, सभी, कोई भेदभाव नहीं था, किसी किस्म का भी कोई ये नहीं था कि ये अपोजिशन से है, ये रूलिंग पार्टी से है, ये उससे है। बड़ा तकलीफ होती है मेरे को, मैं बोलना नहीं चाहता था आज, लेकिन मुझे कहा गया कि भी बोलना चाहिए। बहुत फर्क आ गया श्रीमान जी, इतना फर्क आ गया कि उसको बयान नहीं किया जा सकता और मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं बयान नहीं करूं उसके बारे में। श्रीमान जी, सेंट्रल हॉल में जब बैठते थे तो एक अपनापन होता था, दुख सुख की बात होती थी, एक दूसरे की मदद की बात होती थी। आज वो चीज नहीं है। मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा कि जैसे यहाँ भी जो वेटिंग रूम है या एक लाउंज है, उसमें मैंने महसूस किया कि एक में एक ग्रुप बैठता है, दूसरे में दूसरा ग्रुप बैठता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, इस 30 साल के सफर में 5 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहा। कॉर्पोरेट अफेयर्स में डिपार्टमेंट मेरे को दिया गया और उसमें काफी बदलाव मैंने लाने की कोशिश की। उस वक्त कुछ ऐसे इश्यूज भी आए जो बहुत ही सेंसिटिव थे, जैसे सत्यम का स्कैंडल हुआ था, अगर आपको ध्यान हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी और भविष्य का सोचने वाले थे। श्रीमान जी, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। मैं एक बार फिर अपने सभी साथी जो आज रिटायर हो रहे हैं, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड, वो उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत करने का एक मौका है। जैसे मैंने शुरुआत की थी वैसे एक नया मौका है। वो अपने सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, देश की सेवा करेंगे। यहाँ जो एक्सपीरियंस मिला
अभूतपूर्व है, इसका कोई मुकाबला नहीं। मैंने दुनिया के तकरीबन 100 से ज्यादा मुल्कों में मैंने ट्रैवल किया है, पहले भी पार्लियामेंट में आने से पहले और कुछ बाद में भी, लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो फीलिंग यहां पर रहकर मिली वो अभूतपूर्व है, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। श्रीमान जी, मैं एक बार फिर अपने रिटायरिंग साथियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो देश की सेवा में अपना योगदान जो उन्होंने यहाँ से सीखा है उसका योगदान दें। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे मौका दिया। जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले सका क्योंकि समय की एक स्केर्सिटी है, बहुत से साथियों को बोलना है, इसलिए मैं उन सबको सबसे माफी मांगता हूं और आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। Dr. M. Thambidurai avargal. Thank you, Chairman sir. Today, I stand before this august house for what is likely my address after fulfilling the present term of 6 years as a member of the Rajya Sabha from Tamil Nadu. Representing All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, I am filled with a deep sense of gratitude, humility, and reflection. Though I have been re-elected and will continue to serve the country as a member of this august house, I am duty-bound to deliver this farewell speech with a great honor. This house has been my second home, a place where I have witnessed the finest traditions of parliamentary democracy, debated issues of national importance, and contributed to the welfare of our people, particularly those of Tamil Nadu. Sir, I began my journey in public service inspired by the timeless ideals of Thandai Periyar, Perunar Anna, and Purushottam MGR, and later guided by steadfast leadership of Amma Purushottam Jayalalitha. The Dravidian principles that form the very foundation of our movement, self-respect, social justice, rationalism, and federal equality, have been my constant compass. These principles, sir, teach us that every individual deserves dignity without discrimination, that society must be rebuilt on equality, eradicating caste, and empowering the backward and marginalized through affirmative action and inclusive welfare. That blind faith and superstition must be given way to scientific temper, critical thinking, and modern education. That true federalism ensures states like Tamil Nadu receive equal resources, respect our language and culture, and autonomy to pursue development suited to our needs. Sir, I have always insisted in the House to make all the official languages of this country, the languages of the country as official national official language. This is most important thing always raised in the House for main continuous step. This especially the upper house. This is called upper State Council of States. This is the place where we can raise our rights to raise the equality to raise for this country, sir. These are my not mere slogans. They are a living philosophy that has transformed. Sir, today I express my profound thanks to the leaders of my beloved ADMK, our respected General Secretary of Party and former Chief Minister, and going to be the next Chief Minister soon, Edappadi Palanichami, and cadres who have placed their trust in me time and again. Sir, Palanichami unwavering support, encouragement, and collective strength of the party have enabled me to serve with their dedication once again in this house. To the workers, functionaries, and
supporters across Tamil Nadu who have stood by the party and by me. My heartful gratitude to all of them, sir. The ADMK's commitment to these ideals, blending social justice with practical, people-centric governance, has always been my guiding light. I also, sir, extend my sincere thanks all the ministers here who associated my past. So I started my career in 1984 and became Lok Sabha member at the age of 33, 34 at that time. At that time, I became Deputy Speaker with the blessings of Prachar MGR and Rajiv Gandhi was the root cause. They made me the Deputy Speaker of Lok Sabha. Then afterwards, my leader, Procedural Evema, made me Cabinet Minister in Vajpayee government. That is opportunity I served in the, at that time you were also in the Lok Sabha at the time that you served there. Then afterwards, once again, I went to the state politics. I was Education Minister there and came back here. And with the blessings of Madam Jayalalitha ji and Modi ji, I became second time Deputy Speaker of the Lok Sabha. So these are my experience which I served. 5 times Lok Sabha member, 2 times a Legislative Assembly member, and now once I completed the Rajya Sabha and second time also I'm coming. This is my career which I had the opportunity to serve. So, and also, sir, I want to appreciate the Deputy Chairman who has taken over a lot of efforts during my. I also served as Deputy Speaker at the time. You also Deputy Chairman. We both are together. Many conferences attended. Anyhow, we are missing him. I hope that he will come back once again as Deputy Chairman. That I'm expecting. Same way, Kargeji also is an eminent leader. I think he is from Karnataka. He will come back. Sir, I'm also thankful, especially my state members who are retiring just now. That is G.K. Vasan is going to retire, and I hope that he will come. He also may apparently come back once again. And also Selva, DMK member, my friend and brother Selvaraj, and also another member, Telango, is there also, eminent lawyer, also here, and also Dr. Kanimuri Somu. Sir, I am very, very grateful to that family because his father is the founder of our DMK party. One of the members was the grandfather, and his father also so very close friend of mine. But unfortunately, due to his service here as a MOS Defense Minister, he lost his life. But anyhow, we happen to see that he died when he was on the service of the nation. Yeah, that has happened. Yes. But anyhow, I am seeing her as his father. My relationship with his father is very patient. She has come over here. But our Shivaji said that she may go to state politics. I heard a speech. Said state politics there, but she has come over here. I hope once again she may come also here also. Not necessarily, at least Lok Sabha also she can go. There's people, parties there. Therefore, this is all opportunity, sir. We are remember how to serve here. And also, I am very grateful to you also. You've given the opportunity to, during my, as you have become Vice President of India and also Chairman, given the opportunity to speak many times. And I hope that you will continue when I'm second term also, which I'm renewal is going to take place third onwards at that I hope. Sir, so many other members from Andhra, Telangana, and Kerala, and many people coming from Congress side, other parties, BJP side. Because if I take along the names, as already Patra spoke all the names, sir, one time you always to associate with the letter which you give. I associate my letter to include some of Patra's names, whatever the names he spoke. Therefore, I also congratulate them and bless them on behalf of you, and they will come back and serve. Because as Prime Minister said, there is no end in public life. Nobody will return public life, sir. Everybody will say, there is enough. They will say, one term and a half, 3 times. This is the namesake. But inside out, till the death, the politicians won't leave the seats.
No politician will retire. Our deputy chairman is there. He may, once again, he will come back. I hope that, because my term also saying, this is the end, they will say. But my heart won't accept. But every heart must be that think, as a public life, when they have come, then no retirement. Retirement is the end of the life, is the retirement. Up to that, everyone must have their opportunity to serve the society, for the country. For that only we are coming. Therefore, this is the August form, which is giving opportunity to fight for the people of our country, develop the nation. Therefore, once again, I thank my leader, Edappadi Palaniswamy, given the opportunity to come once again to the House, and also for you, given the opportunity many times to participate in the discussion, and all my colleagues who are retired, not retiring, they come back also. Like Brutus is better. John Brutus is always blessing everyone. With his blessings, everyone will come back. Don't worry. He will come back. Therefore, I hope that our political career is not the end. It is for the nation, service for the nation, the society, and the principles, which our principles already said, we are having the right for all the states, especially Tamil Nadu. That is what many times, even though others may differ, at the same time, I am also participate along with them, supporting the ideas for the rights of Tamil Nadu and the resources to get. Siva may have so many differences of in fighting, but I never let the principles of a Dravidian movement. Always I am keeping that spirit is with me. My name is made Thambidhar because Annadurai, that is Anna, who became a member of this house 1962, is served here. My madam, my leader, my beloved leader, Jayalalitha also served here, the Rajya Sabha. These are the places I have come over, men. That is because of the effort of the movement and the cadre gave the opportunity. I am always sincere to my party and cadre and the people of Tamil Nadu, sir. Thank you very much, sir. Sriman Dr. John Britta ji. Sir, as Thambidhurai said, there are few people who will never retire, sir. But from left parties will retire. That is how we have decided. Of course, as Tiruchi Shivaji always say, today also he said that retirement is not an end, but a bend. And I will never get a chance to bid farewell to Tiruchi Shivaji. But he will get a chance to bid farewell to me. And I will soon give you a chance also, sir. Sir, all of those people who retire have debated the fate of this nation and represented the diversity of this rich country. The profound words of Gandhiji, who said that the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. I'm sure that all of them must have lost in the service of this nation, sir. Sir, I would not say much about Devagowdaji and Khargeji because I'm sure that they will come back. And Devagowdaji became the Prime Minister because our party decided not to shoulder the responsibility of the Prime Ministership, Jyoti Babu. So in one way, we should be credited for making him the Prime Minister. Khargeji, he's coming back, Khargeji, I'm sure about it. See, when we are traveling from Kerala, once we cross Vindhyas, he is our leader. And I always respect him because he has been always a champion of the trade union movement. Sir, I need to speak 2-3 aspects of Deputy Chairperson. We had a chemistry, sir, and maybe because we are from the same profession, that is media. He was an impeccable editor who made rich contribution to his profession. And he has passed through turbulent waters, as often said that smooth sea never made a good sailor. So he has seen turbulent house, but I would not say that he was impartial, because there is nothing called impartiality.
Nothing all impartiality. He was fair and he was just, and of course, he upheld the dignity of this house, sir. So my colleague Bikash Ranjan Bhattacharya is retiring. He's a versatile personality from theatre to the court, a legal luminary. I would miss him. And of course, my dear friend Suresh Reddy. I don't know what to speak about him, a noble heart, decent to the core, sir. And as a former speaker, I always felt that his services should have been used by this house, which hasn't happened, sir. And he will soon come back. And Prem Gupta ji, of course, I don't need not to say. Priyanka Chaturvedi, she has been a great friend of me. And the house will miss her Vedic knowledge because a Chaturvedi is leaving this house, sir. And I don't know what will happen to the page 3 of the newspapers if she leaves. And I could see a lot of photographers saying that we are going to be jobless because her photos used to be splashed in other places. She's an expert in public affairs. We were part of a delegation in Germany, and many of the German leaders were saying that she would be taken to German Bundestag, the parliament. So I hope that she would be soon co-opted to one of the foreign parliaments. Sir, Vasanji, I should say that. I had a real connect with his father, and always his presence reminds me about Mopanarji. And I feel that he would be active in Tamil Nadu politics, and he would come back one day. And Fauzia Kanji, I would say that, she went across from one vertical of the society to another vertical. Women's empowerment, education, social causes. And she was studious and luckiest too. In the sense, she always used to get 0 over, special mention, Pride Members Bill. And when she is parting us, Fauziaji, please tell us the secret. How could you manage this? And Rajini Patilji, she was a woman leader with resilience, and I still recollect, she was suspended for 6 months, but she never lost her heart. And Digvijay Singh ji, I would say that. He always used to address us comrade, the only Congress leader who respected the comrades, I would say. Jairam ji has never called me a comrade, none of my colleagues. And he always used to say he respects the left movement and always want the CPM to be robust in the political spectrum. So Yelango, my dear friend, a legal eagle. We will fight the battle in Kerala, sir. Okay. Yes, I know that you have a problem with us. Yeah. Though we made you the minister, without support only you became the minister. You understand that? You forget that. We extended the unconditional support to the Congress party because we had the conviction to keep away the BJP from power. You don't reciprocate sentiments. You will never do that. I know that. Yes, I know that. Hey, Mr. Jara Ramesh, 11 MLAs of Congress deserted you. You had a track with BJP. That way BJP has 2 more MPs in this house. Don't provoke me to say that. Okay. Today you praise all the retiring. No, he provoked me. That's why I'm saying, sir. Everybody knows you both are complimenting each other. Yeah, thank you, sir. Sir, I take your words, sir. Sir, I respect it. That's why I was provoked. Sir, Kanimudi ji, she's going to be active in state politics, and she has promised me that she will take her inside her red beacon car, which she is soon going to have. And I wish you the best, sir. I have few friends here. We collaborated. Saket Gokhaleji, articulate, courageous, and he performed with profound conviction. The brother, a former comrade, I still call him the comrade. He reverberated Tagore in this house. Ajit Kumar Boyanji, of course, a great friend of me. And Ayodhya Ramareddy is the 2nd richest person in the parliament, sir. And I'm sure that he will come back as the 1st richest MP. A great friend of me, he always thought about Kerala. Subhash Chandra Bose Pilli, a decent, dignified political leader.
Parimal Nathwani, he used to give us a lot of inputs and helped us also. And Neeraj Tangi is going to come back. And there are many people whom I don't want to take the name because already Sasmit Patra has put it on record. And I share every name he has spelled. Thambi Dureji will be a permanent fixture to this house, I'm sure about it. Though I wanted him to be the Deputy Chief Minister, but he has been sent back again. And I wish all the retiring members, Parimal also will come back. I want him to be back, of course. Yeah. And wish all of them a productive and also a contributing service for the nation. Thank you very much. Now, I request our Shriman Digvijay Singh ji to deliver his speech. माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, लोगों को इस बात का आश्चर्य होगा कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में कभी मेरे छात्र जीवन में कभी भी राजनीति से मेरा कोई संपर्क तो समर्थन नहीं था। कुल परिस्थितियां ऐसी प्रकार की बनी कि मैं 22 साल की उम्र में नगरपालिका अध्यक्ष बन गया सर्वसम्मति से, 30 साल की उम्र में विधायक बन गया, 33 साल में राज्य में मंत्री बन गया, सांसद बन गया और 40 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैंने हमेशा अपनी विचारधारा के मार्ग पर चला हूं। मैंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कटुता नहीं पाली। मतभेद होते थे और विचारधारा में मतभेद होंगे, लेकिन मनभेद होने की मैंने कभी उसको मौका नहीं दिया। आज भी मेरा ये आपसे अनुरोध है, हो सकता है कि मेरे भाषण में कई बार कुछ कटुता आई हो, किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन इतना मैं आपको अवश्य कह सकता हूं कि चाहे विधानसभा मध्य प्रदेश में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे यहां हो, मेरे संबंध हमारे उन लोगों के साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं जिनकी विचारधारा से मैं सहमत न था, ना मैं हूं, ना कभी रहूंगा। जहां तक हमारे कॉमरेड्स का सवाल है, ये कॉमरेड्स के कार्य संचालन में कुछ बात हो सकती है, लेकिन इनकी जो गरीबों के पक्ष में जो विचारधारा रहती है, हमेशा मैंने उसका समर्थन भी किया है। मैंने माननीय सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं उस लोकसभा में भी रहा जिसमें अटल जी, राजीव जी रहे, इंदिरा जी ने मुझे कांग्रेस में प्रवेश दिया और चंद्रशेखर जी भी संसद में थे जब मैं वहां पर था, और इन लोगों से प्रभावित होकर ही मैंने अपना राजनीतिक सफर पूरा किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं कभी भी सदन में कभी भी जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मैं उसके पक्ष में नहीं रहा है। लोकतंत्र की बुनियाद है चर्चा, और सदन में ये सत्ता पक्ष की जवाबदारी होती है कि वो विपक्ष के साथ चर्चा करने के बाद और कोई रास्ता निकाले। इस सदन में हमारे अंसारी साहब भी अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने कोई भी बिल दिन में पास होने का मौका नहीं दिया। रास्ता निकलता है और निकलना चाहिए। यही बुनियाद है लोकतंत्र की, जिसमें आज हमें कमी देखने को मिलती है। मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आज इस देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक कटुता बढ़ती जा रही है, मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, ये देश के लिए उचित नहीं है, न हमारे संस्कार और संस्कृति के उचित है। और
ना लोकतंत्र के लिए उचित है, ना भारतीय संविधान के लिए उचित है। मैं आज आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अपना रास्ता खुद तय किया है और ये मैं आभारी हूं आज कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने मुझे हर सदन में आने का मौका दिया। और मैं आज इस अवसर पर आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि अटल जी की वो बात मुझे याद आती है कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, आगे चलकर हम और काम करेंगे, लेकिन आज इस समय मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने मेरे लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में, जैसा कबीर कह गए थे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। धन्यवाद। श्रीमान केआर सुरेश रेड्डी गारू। Thank you, Chairman, sir. So today, I rise with a mind full of grateful memories as I bid farewell to this august institution, sir. At the outset, I would like to thank you, Chairman, sir, and also thank the Honorable Deputy Chairman, who have been so gracious in guiding me and helping me to find various means to raise public issues in this august house, sir. I also would like to acknowledge the Honorable Venkaiah Naidu ji, the Honorable Dinkar ji, who so graciously presided over this august house, sir, and who very impartially enriched the proceedings of the house, sir. And you in particular, sir, have been setting very noble and high traditions. While I leave the house, I live it more confidently that under your leadership, the House and parliamentary proceedings will continue to prosper, sir. Of course, the Honorable Panel Chairman, who also was so gracious, so helpful, not only at times of pandemonium, but also when there was peace. They were a great help to the chair, and I take this opportunity of thanking them also, sir. My dear friend, John Brittas and Sasmit Patra ji, in their speeches, have so elaborately, eloquently dealt on each single member and their contribution that I would not like to get into a tedious repetition and take away the valuable time of the House. I'm very grateful to him, especially as a neighbor. He has set a very good example as what a neighbor could be and should be. He's also been a very guiding help to me and all the floor leaders who have been very helpful, especially to the chair at the BAC meetings and other floor leader meetings, where in spite of the turmoil here, you kept on advising and contributing to the smooth functioning of this august house, sir. Chairman, sir, I'm here today because I pay my gratitude to my leader, KCR ji, who trusted me and entrusted the responsibility of being the BRS parliamentary leader, sir. So in my own small way and with the support of my colleagues from my party, we had been able to raise issues concerning the state, the country, and people at large. I come from a proud regional party, Chairman, sir, and regional parties are not merely political formations. They are voices of our diverse cultures, languages, and aspirations. Under KCRG's leadership, we fought for 14 years to ensure the aspirations of the people from a backward region are converted to a state. And I remember so vividly, so passionately, when you allowed a debate on the Constitution, when this August House took up the debate on the Constitution, and when I had the opportunity of debating on that, I could see my leader's vision so clearly through the Constitution, how Article 3 helped us create a state, and how the directive principles of the state have guided my leader KCRG in ensuring that the aspirations of the people of Telangana ushered in to make it one of the most developed states in this country, in this great country, Chairman, sir. Chairman, sir, our approach, of course, has been very consistent. We have been working on principles and being non-aligned. Whenever issues came up in this house, let us say the demonetization, because we supported it
where the intent was good, though the content fell out. When the Kisan bills came, there the content looked good, but the intent was a suspect. So we differed from bill to bill, and BRS party, under the guidance of our leader KCRG, we have supported the government. We have opposed the government in the larger interest of the nation and in the interest of our own state, Chairman, sir. Well, as they say, Rajya Sabha, like I said, I'd like to reiterate, sir, I'd said it earlier, Rajya Sabha, Lok Sabha being the cup and saucer analogy as they give it, and the cup, which is the Lok Sabha, the saucer, which is the Rajya Sabha, and you holding the saucer has ensured that the temperatures really cooled, and the debate was so fulfilling that for many, many days, when the Lok Sabha was non-functional because of various reasons, the Rajya Sabha fulfilled its due role as the House of Elders. And I really, from the bottom of my heart, I thank you for contributing to the successful running of this August House, Chairman, sir. Very good. Chairman, sir, my journey began in 2020, and 2020 has been a year which the world will never forget. It was the year of the pandemic, and when the pandemic was at its peak, when the world was unsure of where we were going, this August House took up such wonderful deliberations, cutting across party lines, and debated on how to save lives and livelihood of our people. We debated on how the migrant labor should be taken care of. We debated on how the vaccine should come out. And I remember so widely, Jayaji is not there. I told that day in the House, like how earlier the House, the people of the country used to look forward for the new release of Jayaji's and Amitabh Bachchan's movie. Similarly, they were looking forward for the vaccine. So there was a little bit of wit humor, even at the time of seriousness, across all the members, Chairman, sir. Of course, the House also witnessed the supreme sacrifice of our brave soldiers in Galwan, where all of us stood like one, contributed, ensured, and raised the spirits of our soldiers in the frontiers, Chairman, sir. Historical bills have been passed in this August House. I would not like to get into the tedious repetition, like I said, but I was fortunate to be part of it. Some we supported, some we opposed. The debates, Chairman, sir, is what I take back. The debates of all the honorable members, the senior leaders, they will be guiding me in my public life, in whatever role I'll be playing outside the House for public service, Chairman, sir. Chairman, sir, I would like to place on record the leader of the House, Naddaji, whose demeanor and generosity, and the leader of the opposition, whose wit, humor, and wisdom ensured that there was a good cohesion in the House, which held as catalyst so that the House stood like one and continued with the debate. And of course, all the floor leaders supporting it, and all my fellow members across supporting the initiative, sir. And finally, Chairman, sir, I would like to thank, not the first but not the least, the Secretary General and his entire staff. The Secretary General and entire staff who showed utmost courtesy and the guidance for new members, for old members, at every step. They stood without a hitch, without any problem. They continued to guide us, sir. And in conclusion, there were a lot of recommendations made. I would like to conclude with only one thing. To bring down the heat, to bring in more bohemia, I would suggest, Chairman, sir, that let an annual sports meet be held for all the parliamentarians. So that, I think, would usher in a good sportsmanship, which would be on the ground there and in the House. Thank you, Chairman, sir. Now, message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on the 18th of March 2026, has adopted the following motion: that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to first day of last week of Monsoon Session 2026. Shriman Praful Patel ji. Thank you, Chairman, sir. I join all my colleagues who have made some very wonderful farewell speeches in bidding farewell to many of our colleagues who are retiring, and welcoming also some of them who have been re-elected
back to this August House. Sir, I've had the privilege of being in the other house also with your kind self, and also on several occasions in this house. And therefore, over the years, one obviously develops a lot of friendships, a lot of personal bonding with many of our colleagues. And it is also with a heavy heart sometimes we have to bid farewell to all our colleagues who are retiring. But at the same time, as my friend said, that life never comes to an end. Once in public life, you are there till your last breath. I also would like to take this opportunity to not only say farewell, but also welcome to my beloved leader, Sharad Pawarji, because I have spent a decade with him, and I have learned a lot from him and gained a lot through his experience and wisdom. And he has had a very long innings, both at the center and the state. And he has again come back, and which is something which is very heartening and very welcome. I will also, because I come from Maharashtra, I would also like to say a farewell to our esteemed colleague Fauzia Khanji. She has also been my party colleague for many years, and I have known her as a great educationalist and a member of Maharashtra's cabinet, as also a very esteemed and very learned member of this distinguished house. Priyanka ji is also a very dear friend who has evolved over the years from being a spokesman of the Congress party to a very, I would say, an intellectual member of this August House, and has contributed to many meaningful debates. I will not take everybody's names because it will take a lot of time. But one thing is certain, sir, that the Rajya Sabha has its own uniqueness. We both are houses of parliament, and of course this is known as the House of Elders. But the fact is that the Rajya Sabha has much more, I would say, sanity than the other house in the present times. At least we function. There may be some chaos here and there, but somehow you are able to find a way. And I'm sure, as all of our colleagues here have been members for many years with long experience, this house shall continue to be a guiding force for our parliamentary democracy. Sir, with these words, I would like to say farewell to all our friends who are retiring. Some have come back. They are most illustrious members of this house. Big welcome to them. And once again, sir, on behalf of myself, my party, I wish all the retiring members a great life ahead in the service of the nation and for the public interest. Thank you, sir. Sriman Santosh Kumar ji. Thank you, Chairman. Today, as we bid farewell to our friends and fellow parliamentarians, in fact, all of us are filled with mixed feelings. Gratitude for the service rendered by them, admiration for their contributions, and of course, a sense of loss. All these retiring members, I don't want to mention anyone's name, have contributed in strengthening the parliamentary proceedings. They have contributed immensely to strengthen our democracy through their wisdom, through their experience, and their unwavering commitment to democratic spirits. As we all know, this is not the end of the political journey. So, of course, they will have new opportunities and avenues to continue their political journey. In fact, I think that they all must be very happy with the fact that they got an opportunity to serve as a member of this August House. Out of 140 crores of Indians, only
handful of us, a very few minimum of us are getting a chance to serve like this. So they must be proud of that fact. And the constitution making was a mass movement. The Constitution of India was prepared not only by the drafting committee members. It was a mass movement in which all of us, all people from all walks of life participated. Our students, our artists, people from all sections had contributed to prepare the constitution. It was not a drafting committee's exercise only. So now it is our duty to carry forward that legacy. Jawaharlal Nehru, Atal Bihari Vajpayee, many other towering personalities. From my side, our party side, Indrajit Gupta, all these people contributed in strengthening parliament democracy. But unfortunately, parliamentary democracy is facing a lot of crisis. It's deepening crisis. For example, money, threat of the influence of money in parliamentary politics, castes, and many other elements are vitiating our democratic system. So at this crucial juncture, we will miss some of our wonderful parliamentarians like, I don't want to mention any, but Shakti Singh Gokhale, many of us, miss him. So I think they can continue their fights against, for the genuine cause of the people in the coming days. And I wish, on behalf of my party, all the very best, sir. Thank you. Shriman Abdul Wahab ji. Thank you, sir, for giving me a chance. First of all, I am not again repeating the names. Everybody, those who are parting from us, is very close to me. And during my 17 years of Rajya Sabha life, this is the most important, this one I can feel more close friends. And I'm not naming them because if I miss somebody, especially just like our friend John Bittas telling about ladies and all, they will feel in the other way around. So many other people also from this part and that part. My request is, if you are agreeing, as first Sanjay Singh told, I think this we should be, I'll be XMP next year onwards. So at least an entry to the lounge to come here, to come here. Otherwise, we're not coming to Delhi. How can we see our friends? There is no central hall now. So we should have at least central hall now. There's a small cabin, but at least we should get a chance with our card to go there, not here. And second thing is the pension is very mean. Pension, either you cut off the pension or give a minimum livable pension for an dignified. Not in my case. Most of the friends I know, ex-MPs, how they are living. They are starting from one place to other place in the train. It is free, food free, and going back again. At least they are getting food every day. That is the situation of so many ex-MPs, which I know. So please do this one. Please recommend a reasonable pension. Everybody is getting pension. For nothing, people are given now freebies. For an MP, even, okay, they got whatever they during their life. So please, in your capacity, please recommend, at least for Rajya Sabha members. So, no, if, okay, everybody I'm telling, but I am telling, being our chairman. So, you just, our other Om Birla also, you can easily tell and make a resolution for that one. In this 140 crore and this trillion, economy, trillions of economy, this is a peanut. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity. And I hope that next year, John Bittas will tell about me also, same thing, when I am retiring. We all, okay. So we are all the same boat. Thank you, sir. Before calling Dr. Kanimuli NVN Somoji, I want to draw the attention of this house. She lost her father when he was the Minister of State for Defense while performing his national duties in the northeastern area. And his body was accompanied by none other than former Prime Minister of India, Shriman Atal Bihari Vajpayee. So now I call upon Dr. Kanimuli NVN Somoji. Thank you, Honorable Chairman, sir, for making a mark on my father. Thank you so much. Sir, I express my deep gratitude and sincere thanks to those great people with golden heart
those who guided me and showed the world holding my hand. Sir, my parents, late N.V.N. Somu, who was the member of the Lok Sabha and, as you mentioned, MOS of Defense, and Srimati Uma Devi Somu, who brought me to this world. Muttamaringa Dr. Kalangar brought me to the political world. My leader and the background of the Dravidian model government, Thalapathy M.K. Stalin, gave me the powerful opportunity to serve in this august house and to allow the voice of women to resonate in the walls of this house. Sir, I'm ever indebted to them. I also take this opportunity to thank the Honorable Deputy Chief Minister Udayanadi Stalin for giving me this opportunity. Sir, I have a great pride of being a product of the Dravidian stock, the legacy of Tandai Periyar and Perarigar Anna, and my grandfather N.V. Natarajan in my blood and breath. Sir, my beloved floor leader, Tiruchi Sivaji Anand, is a guiding force for me to perform to my full potential in Rajya Sabha. I remember how generous he was when it comes to giving opportunities to MPs like me in our party. His ability to gel well with MPs of the other political parties also carried a friendship forward. I thank him for being a strict teacher when it comes to the performance, getting the maximum from us, to bring it to all the members together. I have also been a disciplined member. I hope Anna will accept this, as always he wished the members to be. Sir, I entered this house with an open mind and empty hands, but leave with mind filled with great memories and wonderful experiences, which I consider a great privilege. I'm immensely happy to share the space with some truly legendary personalities in public life. Rajya Sabha gave me the unique experiences on the essence of democracy and politics. Still remember vividly my first day in this house when I took oath in the old Parliament House, now called the Samvidhan Sabha. From that day, last 54 months, that is 1,540 days of my life in Rajya Sabha, I have the privilege to work under 3 vice presidents and chairmen of the Rajya Sabha. I learned a lot from the polite but strong attitude of Sri Venkaiah Naidu, but the witty but concerned words of Sri Jagdeep Dhankar, and smiling but strict master of yourself, sir. Thank you so much. I must say all the 3 chairmen are kind and considerate with opposition members like me. I got the opportunity to raise important issues pertaining to the people of Tamil Nadu with the permission of the chair. Sir, I should not forget the deputy chairman, Harivan sir, is always greet us with this typical smile, but strict master the moment we deviate a little from the subject. He will really say, no, I will not allow this. That's something we have to mention about him. What impressed me the most was the contribution of my senior colleagues, cutting across all political parties to encourage and support their junior colleagues. Their contribution in upholding the democracy and fulfill the fundamental duty as a member of this august house. The leader of the opposition, Sri Mallika Kharge, has spoken meticulously but with authority. I will never forget the classic yet sharp budget critics analysis by Sri P. Chidambaram, the pointed and thoughtful provoking speeches of my friend John Brittas, the electrifying speeches of Sri Derek O'Brien, the soft yet powerful speeches of my friend Priyanka Chaturvedi, the fiery speeches of Srimati Jaya Bachchan, the crystal clear speeches of Fauzia Khan, the terrific speeches of Sri Sanjay Singh and Professor Manoj Jha, Sri Abdul Wahab, Professor Ram Gopal Yadav, Srimati Dola Sen, Shakti Singh Goyal, Sri Ayodhya Ramireddy, and the to-the-point speeches of Dr. Shashmit Patra. I can go on, sir, but I would like to associate with Shashmit Patra as he has mentioned all the other names. So I cherish the occasions when I was genuinely praised by the chair. Sir, Rajya Sabha is not merely a chamber of debate. It is a living institution of wisdom, continuously and with the constitutional balances. The greatness of democracy is that assent and dissent views are taken on the same platform while discussing about a national issue or people welfare measure. Thorough discussions, deliberations, and dialogues are essential elements of democracy. Duty, dignity, and discipline is the cornerstone of a DMK party, democratic reformist political philosophy, and I was able to gel both and give a small percentage of service to this nation. If in my time here, I have given a small measure of dignity to this house or to the welfare of the people, I consider my tenure as very, very meaningful. Sir, I also take this opportunity to sincerely thank every one of my fellow MPs cutting across political parties
from whom I learned lessons to enrich my political career and wisdom. My special thanks to all the women MPs for their sisterly affection and lovely smile bridging us beyond our political ideologies. Last but not the least, kindness of the marshals, officials, and the staff of Rajya Sabha and the parliamentary security personnel for their tireless, selfless service. Sir, I leave with respect for this institution, faith in its future, and hope that it will continue to be a beacon of reason, restraint, and responsibility. Thank you, sir. Thiru N.R. Ilangoji. Honorable Chairman, sir. I thank you for allowing me to speak in Tamil. ஒரு சாதாரண பின்புலத்திலிருந்து இந்த மாபெரும் அவைக்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தமிழக முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அவையில் வழி அனுப்பு விழாவிற்காக எங்களை வாழ்த்தி பேசிய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றவர்கள் பேசியதை போல எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெருமை கிடைத்தது. 3 துணை ஜனாதிபதிகளிடம் இந்த அவைத்தலைவரிடம் பணியாற்றக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடைத்தது. மரியாதைக்குரிய திரு வெங்கையா நாயுடு, திரு ஜெகதீஷ் தன்கர் மற்றும் உங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். துணைத் தலைவராக பணியாற்றிய திரு அரவிந்த்ஷி அவர்கள் எங்களை வழிநடத்தியதோடு அல்லாமல் உரிய வாய்ப்புகளை கொடுத்தார். அது எங்களுக்கு மிகவும் துணையாக இருந்தது. எங்களுடைய குழு தலைவர் திரு திருச்சி சிவா அவர்களை பற்றி நான் குறிப்பிட்டாக வேண்டும். அவரை குழு தலைவர் என்று சொல்வதை விட எங்களை ஒரு குடும்ப தலைவராக தான் அவர் எங்களை நடத்தினார். ஒரு மூத்த சகோதரனாய் எப்படி அவையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து, ஒரு மூத்த சகோதரன் கைப்பிடித்து கொண்டு ஒரு குழந்தையை கைப்பிடித்து கொண்டு போகிறார் போல் இந்த அவையில் எங்களை வழி நடத்தினார். அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மூத்த தலைவர்கள் திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே, திரு கபில் சிபல், திரு பி சிதம்பரம், திரு திக்விஜய் சிங் ஆகியோருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு திரு ஜே.பி. நட்டா அவர்களும் மரியாதைக்குரிய திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களும் எங்களுக்கு தேவையான அவையில் எங்களுக்கு எதிராக பேசினாலும் கூட, எங்களை மிகவும் கண்டித்து பேசினாலும் கூட அவைக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் எங்களுக்கு மிக துணையாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மிக குறிப்பாக மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இந்த 3 குற்றவியல் சட்டங்களில் நான் கொடுத்த பங்களிப்பை என்னை தனிப்பட்ட முறையில் கூட்டு பாராட்டியதற்காக அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் திரு ஜான் பிரிட்டாஸ், திரு சந்தோஷ்குமார், திரு சிவதாசன் ஆகியோர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டாக்டர் மனோஜா, திரு சஷ்மித் பாத்ரா, திரு நீரஜ் சந்திரசேகர் மற்றும் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டியை சேர்ந்த தோழர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு டெரிக் ஓபிரையன் அவர்கள் எங்கு பார்த்தாலும் எங்களை அரவணைத்து எங்களை ஊக்கப்படுத்தி எப்படியெல்லாம் அவையில் ஆக்ரோஷமாகவும் பேச வேண்டும் என்பதை சொல்லிக் கொடுத்தவர் அவர். நான் 2020 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இந்த அவைக்கு வந்தபோது கூட பல்வேறு காரணங்களால், கொரோனா தொற்று மற்றும் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சில காரணங்களால் என்னால் இந்த அவையில் முழுமையான பங்களிப்பை தர முடியவில்லை. நான் இந்த அவைக்கு ஆற்றிய பங்கு மிகச் சிறிதாக இருந்தாலும் கூட நான் இந்த அவையில் மூத்தவர்களிடமிருந்து பெற்றிருக்கக்கூடிய அனுபவமும் பாடமும் மிக பெரியது, விலை மதிப்பட்டது. அது என்னுடைய இனி வரும் காலங்களில் பொது வாழ்வில் மிக உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். எல்லா திராவிட முன்னேற்ற கழக தோழர்களைப் போல எங்களுக்கு 5 பெரும் முழக்கங்கள் உண்டு. அண்ணா வழியில் அயராது உழைப்போம், ஆதிக்கமற்ற சமுதாயம் அமைத்தே தீர்வோம், இந்தி திணிப்பை என்றும் எதிர்ப்போம், வன்முறை தவிர்த்து வறுமையை வெல்வோம், மத்தியில் கூட்டாட்சி, மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்ற இந்த 5 பெரும் முழக்கங்களை ஒட்டி என்னுடைய பொது வாழ்க்கை தொடரும்.
அதற்கு இந்த அவையில் நான் பெற்ற அனுபவங்கள் எனக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். என்னுடைய உரையை முடிப்பதற்கு முன்பாக என்னுடைய கருத்துக்களாக 2 விஷயங்களை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் நாடாளுமன்ற முறையை பற்றி பேசும்போது பெரும்பான்மை என்பது உடலைப் போலவும் சிறுபான்மை என்பது கண்களைப் போலவும் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார். அதாவது பெரும்பான்மையினராக இருக்கக்கூடியவர்கள் சிறுபான்மையினருடைய கண்களின் வழியாக அவர்களுடைய வழியாக பிரச்சனைகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார். அந்த நடைமுறை இப்போதெல்லாம் நடப்பது இல்லை என்பதை என்னால் அறிய முடிகிறது. இந்த 6 வருடத்தில் நான் அதை பார்த்திருக்கிறேன். எனவே சிறுபான்மையினுடைய கருத்துக்களுக்கு உரிய மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும், அந்த கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அரசாங்கம் என்று நான் கருதுகிறேன். இரண்டாவதாக, பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னபோது வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கு தேய்கிறது என்று சொன்னார். இத்தனை கால இடைவெளியில், இத்தனை பல 10 ஆண்டுகளில் இந்த நிலைமை மாறி இருக்க வேண்டும், ஆனால் மாறவில்லை. அதைவிட வடக்கு வாழ்கிறது தெற்கை வதைக்கிறது என்ற அளவில் நாம் இன்று நிற்கிறோம். வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த சூழ்நிலை மாற வேண்டும், அதற்கு இந்த அவை துணை நிற்க வேண்டும். இந்தியா முழுமைக்கும் ஒரே மாதிரியான கண்ணோட்டத்தோடு பொருளாதாரத்திலும் மற்ற எல்லா செய்திகளிலும் இந்தியா முழுமையும் ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்பிற்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्रीमान मुजीबुल्लाह खान जी। धन्यवाद चेयरमैन सर, आज आपने बोलने का मौका दिया। आज 6 साल पहले हम लोग जब पहली बार राज्यसभा में आए थे तो वो सदन था, उस सदन में अध्यक्ष थे वेंकैया नायडू जी। उसके बाद ये नया सदन में हम लोग आए, फिर हम लोग दूसरे अध्यक्ष को देखे जगदीप धनखड़ जी, उसके बाद आप आए सर। आज यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब, ट्रेजरी बेंच के सब सदस्य और ओपोजिशन में भी जो बैठे हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो अभी यहाँ पर रिटायर नहीं होने के बावजूद बैठे हैं। जो लोग चले गए नहीं सुन के, उनका भी वक्त आएगा, उनका भी वक्त आएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आदिवासी बहुल जिला से आता हूं। नवरंगपुर जिला उड़ीसा का एक छोटा सा गांव है मेरा, तारा गांव। बचपन से मुझे बहुत शौक था फिल्मों में काम करने का। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरे दोस्त लोगों को बोलता मैं फिल्म का हीरो बनूंगा। सब बोलते थे हाँ बन जा। मेरे परिवार पूरा राजनीति में थे, मेरे पिताजी बड़े पिताजी सब राजनीति में थे, मेरे नाना जी एमएलए थे, मेरे बड़े पिताजी मंत्री थे। तो परिवार का राजनीति देख देख के राजनीति में भी रुचि मेरा बचपन से ही था। जब मैं फिल्मों में गया, फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मों के साथ साथ राजनीति में रुचि रखता था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री बिजू पटनायक जी थे, मैं उनसे कहा कि सर मुझे आप टिकट दीजिए, मैं एमएलए बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा एमएलए बनेगा, तू फिल्म एक्टर हो के एमएलए बनेगा? मैं बोला हाँ सर बनूंगा। वो बोले पहले सरपंच बन के आ, तो जीत पाता है कि नहीं तेरे पंचायत में, उसके बाद देखेंगे। तो मैंने बोला सर मैं उड़िया फिल्म का हीरो हूं, मेरे को सरपंच बनाने भेज रहे हैं यहाँ पे, जा पहले सरपंच बन के आ फिर देखते हैं। तो मैं मेरे गांव गया, सबको बोला बिजू पटनायक बोल रहे हैं सरपंच होऊंगा तभी जाके एमएलए टिकट मिलेगा। तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ा अध्यक्ष महोदय। 1992 में मैं सबसे कम उम्र का सरपंच था हमारे देश में। काफी साल तक मेरा गूगल में था सबसे यंगेस्ट सरपंच कौन है, मेरा नाम था। अभी अभी कट गया और कोई आ गया।
उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया गुजार करना चाहता हूं। उसके बाद मेरा नेता नवीन पटनायक का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने मुझे राज्यसभा भेजा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रास रूट में सरपंच था, सरपंच से सीधा मैं अपर हाउस आ गया, बीच वाला छूट गया है अध्यक्ष महोदय। मैं बचपन से थोड़ा जिद्दी था सर, जो चीज मैं चाहता था मुझे मेरे पिताजी मेरे माताजी मुझे देते थे, तो जिद मेरे पास अभी भी है। वो जो 2 सदन छूट गया है, विधानसभा और लोकसभा, में पक्का आऊंगा, क्योंकि जंप लगा के सीधा सरपंच से ऊपर आ गया, बीच वाला छूटा है। पक्का 2029 में या तो लोकसभा जाऊंगा या विधानसभा जाऊंगा। यहां आने के बाद बहुत सी खट्टी मीठी अनुभूति हुई, बहुत से नोक झोंक भी हुआ, लेकिन हम सब कोई दिल में नहीं लिए। हम लोग भाईचारा के साथ हम लोग इतना 6 साल कटाए। सबसे दुर्भाग्य की बात यह हुआ कि काफी साल मैं पार्टी में काम करने के बाद, करीब करीब 20-25 साल काम करने के बाद मुझे जब राज्यसभा मिला, राज्यसभा का सर्टिफिकेट मैं पाया अध्यक्ष महोदय 18 तारीख को, मार्च 18 तारीख को, और 22 तारीख को, मार्च 22 में सारा दुनिया बंद हो गया अध्यक्ष महोदय। कोरोना के लिए सारा दुनिया बंद हो गया, कोई किसी से मिला नहीं, कोई हाथ मिलाया नहीं। ऐसे वक्त में मैं राज्यसभा आया, तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि चलो ठीक टाइम में राज्यसभा मिल गया, नहीं तो वो जो कोरोना का पीरियड था उसमें सोच सोच के आधा आदमी बीमार हो जाता। तो मैं इतना खुश था राज्यसभा मिलने के बाद, कोरोना फरोना मेरे पास कोई नहीं हिटक सका अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल नहीं आया मेरे पास। मैं एक एमएलए को गले लगाया, बोला अरे यार तुम्हारे एरिया में रसगुल्ला मिलता है, रसगुल्ला भेज, बढ़िया रसगुल्ला, सालेपुर, हमारे उड़ीसा का सालेपुर रसगुल्ला फेमस है। वो बोला भैया मैं कल भेजूंगा आपको रसगुल्ला। शाम को आकर बैठ के टीवी देखता हूँ, टीवी बोला वो एमएलए को कोरोना हो गया है। मैं क्या रसगुल्ला खाऊंगा अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा टेंशन में आ गया। फिर उसके अगले दिन सुबह जाकर टेस्ट करवाया, तो लकीली मेरे को कुछ नहीं निकला, क्योंकि मेरा विल पावर स्ट्रांग था और दिल बहुत खुश था। दिल अगर इंसान खुश रखेगा तो उसको ना कोई बीमारी होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगा। कोई भी चीज में मैं इतना कहूंगा, मेरे से बहुत यहाँ सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत से ज्ञानी गुणी है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी चीज में टेंशन नहीं लेने का। जितना बड़ा टेंशन आए, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन में क्या मिलेगा? इंसान मुट्ठी बंद करके खाली हाथ आया था, जब जाता है खाली हाथ जाता है, कोई लेके नहीं जाता। बहुत से लोग टेंशन ले लेके किसी को शुगर, किसी को बीपी, ये प्रॉब्लम आ जाता है अध्यक्ष महोदय। टेंशन नहीं लेने का, आगे बढ़ते रहिए। जो भी हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, रिटायर तो नहीं, कुछ अगले दूसरे जगह में जाएंगे, काम करेंगे, इस उम्मीद के साथ हम लोगों के काम करने के लिए आए थे। जितना हमारे हाथ से हुआ, जितना कोशिश कर सके हम लोग ने काम किया। बहुत से जगह में हम लोग को प्रशंसा भी मिला कि तुम भाई अच्छा बोले, ठीक बोले। कुछ छोटी मोटी चीज अध्यक्ष महोदय मैं आपके पास रखना चाहता हूं। एक की बहुत से सांसद अभी आपके पास गुजारिश किए हैं कि जो पुराना मेंबर है, एक्स मेंबर को यहां पर जब कभी वो आए तो उसको लॉबी में बैठने का वो प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो वो उससे बड़ा तकलीफ और कुछ नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। जब पुराना बिल्डिंग था, हमारा पुराना जो संसद था, वहां पर हम लोग सब इकट्ठा बैठा करते थे सेंट्रल हॉल में। अभी अलग अलग हो गया, लेकिन कभी किसी काम से अगर कोई पूरा एक्स एमपी अगर आ भी गया तो उसको मना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गेट में नहीं सर आप अंदर नहीं जा सकते, ये चीज बहुत तकलीफ होगा अध्यक्ष महोदय। ये गुजारिश है आपसे, इतना आप करवाइए, क्योंकि आज जितने यहाँ पर है वो कल सब एक्स होंगे। कोई परमानेंट यहाँ नहीं है, सब टेम्पररी है। दुनिया में हम लोग आए हैं, सब टेम्पररी है अध्यक्ष महोदय। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको जरा इंटरव्यू कीजिए कि जो एक्स एमपी होता है उसको रेलवे विभाग ने
फर्स्ट एसी में सिंगल सीट ही दिया है। अगर कोई ज्यादा उम्र वाला बुजुर्ग हो गया, वो कैसा अकेला ट्रैवल करेगा? या कोई महिला एक्स एमपी हो गई, वो कैसा अकेला जाएगी? किसी को तो साथ लेके जाएगी। एक ही सीट अलाउ किया गया है एक्स एमपी को फर्स्ट एसी में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसमें कम से कम इंटरवेन करके उसको 2 सीट करवाइए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सबका काम ये चीज आएगा। मैं इसीलिए सबके बारे में बोलना चाहता हूं। आज ये सदन, दुख तो होगा जरूर हमको कि इतने साल से लगाव में हम लोग थे आप लोगों के साथ। आगे चल के सबके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जितने भी सांसद हमारे अभी रिटायर ले रहे हैं, अपने अपने फील्ड में जाएंगे। कोई फिर विधायक बनेगा, कोई दूसरा काम करेगा। पब्लिक लाइफ में तो रहेंगे हम लोग पक्का। उसके साथ साथ मैं काफी दिनों से मेरा फिल्म भी बंद कर दिया था अध्यक्ष महोदय। अभी फिल्म करूंगा, क्योंकि उसमें भी रहना जरूरी है, नहीं तो पब्लिक भूल भी जाएंगे कि ये पुराना एक्टर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकार जो होता है अध्यक्ष महोदय, वो कभी एक्स नहीं होता। एक विधायक एक्स हो जाएगा, एक मंत्री एक्स हो जाएगा, एक एमपी एक्स हो जाएगा, एक्स एमपी कहेंगे, लेकिन एक कलाकार को एक्स कलाकार कोई नहीं कहेगा। चाहे वो हीरो रोल करे, चाहे वो बड़ा भाई का रोल करे, या फिर चाहे वो बाप का रोल करे, एक्टर होता है। मैं इंशाअल्लाह अगले माने अप्रैल या मई से नया फिल्म शूटिंग करने जा रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और आप लोगों को सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग सब एक हैं। अलग अलग पार्टी से हम लोग आए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग सब एक है। हम लोग सब इस देश के नागरिक हैं। हम लोग को देश को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलजुल के काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रीमान निरंजन बिशी जी। Honorable Chairman sir, respected members of this august house, today I rise to speak in this dignified chamber. My heart is filled with deep gratitude and profound sense of responsibility. The Parliament of India is not merely a building of debate, discussion, or deliberation. It is the sacred temple of our democracy, the largest democratic country in the world. It is here that the dreams of we, the people of India, as enshrined in the preamble of our Constitution, find voice, direction, and action. Being entrusted to serve in this august house has been one of the greatest honor of my life. Sir, our Constitution, drafted under the visionary leadership of Dr. B.R. Ambedkar, is not merely a legal document, but a moral commitment to justice, liberty, equality, and fraternity. Throughout my tenure, I have sincerely tried to uphold these constitutional values while raising the voice of the marginalized section of the society, particularly scheduled caste, scheduled tribe, farmers, laborers, workers, toiling mass, women, and the other marginalized communities of this society. Sir, coming from the tribal heartland of Odisha, I have always felt that my presence in this house carried the aspirations and hopes of millions who historically remain unheard. Whenever I spoke, I did not speak merely as an individual member. I spoke as a representative of the village, forest, communities whose faith in the democracy is deep and unwavering. During my tenure, I tried to highlight several important issues like protection of tribal rights, preservation of tribal language and culture, development of backward region, strengthening of education, health, agriculture, welfare scheme for ST, SC, and OBC communities, and safeguarding the constitutional rights of scheduled caste, scheduled tribe. These issues are not merely policy concerns, they represent the dignity, identity, and future of millions of citizens. Sir, India's democracy is strong because of its institution, its diversity, and its spirit of dialogue. The Rajya Sabha, as the Council of State, House of Lords, Elder House, plays a crucial role in the strengthening of our federal structure and ensuring that every region of our country is heard in national policy making. At this moment, I offer my heartfelt thanks and sincere gratitude to my beloved leader, the President of BJD and former Chief Minister of Odisha,
Sri Naveen Patnaik ji, whose visionary leadership, commitment to clean governance, and dedication to the welfare of the people of Odisha have inspired countless public servants like me. Sir, I also extend my sincere thanks to you, my Honorable Chairman, and Sri Harivansh ji, Honorable Deputy Chairman, panel of Vice Chairman, Honorable Leader of House, Honorable Leader of Opposition, Mallikarjun Kharge ji, all Honorable Ministers, and all leader of political parties, and my floor leader, Dr. Sasmit Patra ji, my respected fellow members of Parliament across all party lines, Secretary General Sri P.C. Modi ji, and all the dedicated officers and staff of the Rajya Sabha Secretariat who tirelessly uphold the dignity and functioning of this great institution, Rajya Sabha. Public life does not end with the completion of a parliamentary term. Service to society is lifelong duty. Even after leaving this house, I shall remain committed to the ideals of our constitution, to the empowerment of scheduled caste communities, scheduled tribe communities, toiling mass, marginalized communities of India. Sir, let us remember that the true strength of India lies in its villages, its youth, its farmers, its workers, and its tribal communities. Our responsibility as public representative is to ensure that development, justice, and opportunity reach the last person in this line as envisioned by the maker of our constitution, Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar. I conclude with hope and faith that our great nation will continue to progress guided by the eternal values of democracy, constitutional morality, unity, and social harmony. May this August Parliament, our Rajya Sabha, continue to remain the guardian of the aspirations of the people of India, that is 140 crore people of Bharat Mata. Thank you, sir. Jai Hind. Srimati Priyanka Chaturvedi ji. Thank you so much, sir. Sir, I've now tuned my mind to a 3-minute speech, and I'm always afraid of the buzzer. So I'm happy that today there would be no buzzer and I'll get to speak my mind, but I will try and keep it short. Sir, I would like to take this opportunity to thank my party leaders, Shri Uddhav Sahib Thackeray ji and Shri Aditya Thackeray ji, for giving me a chance to speak for the party in the parliament. My party colleagues and floor leaders of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this support always. To all the lovely people I have met in the Lok Sabha and Rajya Sabha, it will be next to impossible to name names because it would take more than 10 minutes to even count the names of people I've encountered, I've learned from, I've experienced. Thank you so much. Yes. Thank you. I learned from you. And to Jayaji, my friend and my senior colleague, I dare not control you. To all the front rows, seated in the front rows, the senior floor leaders, cabinet ministers across the aisle, thank you for your positive support and motivation always. And I'm actually overwhelmed when all the floor leaders mentioned my name and the contribution that in itself speaks for my term being a successful tenure, sir. To friends who became family, the memories I carry of this chamber, I will cherish forever. To the chairs past, especially Venkaiah Naidu ji, I remember Venkaiah Naidu ji, if he used to like something or like someone speaking and they were speaking on a certain issue-based, something which was important to the parliament, he would extend that time too. So I really miss Venkaiah Naidu ji at times. JP Dhankar ji, because he was quite a strict administrator. And now yourself, sir, you've been very kind and you've been very generous. I express to you all my gratitude. To Leader of the Opposition, Kharge ji, there's so much I have learned from him. His untiring effort to be in the parliament and to continue to be an active contributor to the parliament, I have learned from. To Leader of the House, Nadda ji. Nadda ji has been a graceful presence in the House, and his role as the Leader of the House has been very kind, sir. And I continue to hope that I will have their blessings in times to come. To the entire Rajya Sabha Secretariat, Shri P.C. Modi ji, the support staff, Deputy Chairman Harivansh ji, and panel of chairpersons, my extreme gratitude, sir. So I remember when I was suspended during one winter session,
I was very angry. I was very angry, and Venkaiah Naidu ji was missing at that time. So I went to Harivansh ji and I had so many things to say to him. So I have only learned after that, and I have learned how to also ask for a humble apology for what I said at that time. So I take this moment to thank my children and my husband for being the wind beneath my wings, sir. So a word of thanks to the media. And since John Brittas mentioned the parliamentary photographers, it is just a pause. I shall be back. And they will get busy as ever, sir. So the photographers, the beat reporters, I want to express them deep gratitude. And as much as they may miss me, I shall miss them too, sir. To the people of India, and the immense support I have received ever since my term did not get renewed, I have got lots of love and support across social media from across party lines. So that has been indeed extremely overwhelming, but also made me happy. I had the opportunity, sir, to participate in the passing of the historic Women's Reservation Bill. I could end up becoming one of the beneficiaries of returning to the parliament, indeed through that reservation bill, sir. So again, I'm grateful for that opportunity as well. Sir, before I take my seat, I wish to read a few lines from my father's message to me when I completed my tenure, when he got to know I will not be renominated, which has also been the philosophy of my life, sir. This would be in Hindi. जीव गतिमान है और जड़ स्थिर है, जीव का धर्म ही गति है, चरैवती चरैवती इसका स्थान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगा, जिसे भगवान बुद्ध ने करके दिखाया। अतः हम जहां कल तक खड़े थे, आज उससे अलग स्थान की ओर अग्रसर हों और पिछली जगह के प्रति ना मोह रखें, ना आसक्ति भाव। यह मोह और आसक्ति हमें हमारे लक्षित गंतव्य तक पहुंचने से रोकते हैं। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम रामराज तक ही ठहर जाते, तो रावण का नाश कैसे होता। मानवता के उद्धार से गतिशीलता का गहरा संबंध है और गतिशीलता का त्याग से। इसके बारे में ईशावास्योपनिषद में लिखा है, तेन त्यक्तेन भुजिता मागधम कस्य स्विधम धनम, अर्थात यह जगत परमेश्वर का है। इसी भावना के साथ जो बिना किसी आसक्ति से आगे बढ़ता है, वही उसे पाता है। जो जीवन को इस प्रकार बढ़ता है, वही अपने उद्देश्यों को पवित्रता के साथ उसे पाता है। इस बारे में बड़ी सुंदर एक लोकायुक्ति भी है, सर। बहता पानी निर्मला, सुथरा होए सोए, रुका हुआ तो गंदा हो, जो पाला होए सोए। Flowing water is pure, stagnant water becomes dirty. इस प्रकार से हम हमारे साध्य और साधनों में पवित्रता रखते हुए आगे बढ़ें, जिसमें भगवान भी सहायक होंगे। सत्यमेव जयते। जय हिंद, सर। थैंक यू। डॉक्टर वी शिवदासन जी। No, I am not retaining. Respected Chair, here some of our colleagues are retiring this session. So already our four leaders and the retiring members already spoken here. Our leader, Bikash Ranjan Bhattacharya, the leader of CPIM and the leading legal luminary, and he's also a theatre person. He has given the leadership to our party in this house, and the friends, Fausia Gandhi, she very actively participated in the discussion in the house, and Priyanka Chaturvedi, yes, as a colleague, he participated in a lot of protests inside and outside the parliament. Our Rajini Patil ji, Mamada Mohanda, Niranjan Bishi, my colleague and dear friend Ilango, has spoken here in Tamil, very sweet words, and he has given very good support for parliamentary activities of us. And Selveresu, Tambidere is coming back. NVM Kanimuri, NVM Somu, GK Vasan, or GFN, and with his parliamentary contributions, we know he had given the very well contribution to the parliamentary activities. Saghed Gogale, one of the youngest member in the house, is here. Sagale is very vibrant intervention here inside the parliament and
whenever we are raising the slogan, Saget Govile lead the leading. He has given the leading role inside and outside the parliament. Ritabrado Banerjee, my former colleague in Student Front, now he is in Trinamool Congress. Ritabrado Banerjee also retiring from this house. Our colleagues from Bengal, they told he will play the big role in Bengal politics, that they told. Then Subradha Bakshi, our Bhubaneswar Kalida, when I done my the first speech in this house, maiden speech in this house, Bhubaneswar Kalida was in the chair. He has given some observation to me. I remembering Kalida's support to me. Ajit Buyan, my dear friend, is a dear friend, and he has participated a lot of programs with us. A.D. Singh and Premchand Gupta, Thakur, and our Deputy Chairman Harivamsh Ji, Indu Bhala Goswami, and Suresh Reddy, and our dear friend Shakti Singh Goyal is there. Together we have participated in different committee meetings, and as a colleague, Shakti Singh Goyal given a very good support to me and our work for the people. And I like to mention one of the name. He is not here in this parliament now, Digvijay Singh Ji. He's a former chief minister of Madhya Pradesh, but he kept a very good relationship with downtrodden. He, as a senior member, Digvijay Singh, he considered each and every members, including the junior members in the parliament. I like to mention his contribution here, and the members like, I'm not going to mention all other names, but here I wishing to all the members, retiring members, to best in future, their future activities. I believe they will work for the cause of the people. I wishing a good future to the retiring members of this house. Thank you. Thank you. श्रीमान जावेद अली खान जी। धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। मेरा सीक्वेंस आपने विदाई जिनकी होनी है उनके बीच में ला दिया। ये सत्य है कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो भी विदा होने वाले हैं, प्रियंका जी भी विदा होने वाली हैं, अजीत भाई जो लगातार मेरे साथ बैठते हैं पिछले हाउस से और इस बिल्डिंग तक, इन्हें भी विदा होना है इस सत्र में ही। मेरा 2 साल के बाद नंबर आएगा, इस बात का मुझे एहसास हो रहा है, लेकिन आपने उसी सीक्वेंस में मुझे भी शामिल कर दिया। मैं सब साथियों को जो आज रिटायर हो रहे हैं हमारे हाउस से, मैं उनको जीवन की नई पारी शुरू करने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये कामना करता हूं कि वो यहां से रिटायरमेंट के बाद अपने बाकी जीवन को सफलतापूर्वक व्यतीत करें और जब कुछ उनका नसीब जोर मारेगा या उन पे कृपा पार्टी नेताओं की होगी तो फिर दोबारा हमें वो मिलेंगे, ये भी मैं उनके लिए कामना करता हूं। जो हमारे साथी रिटायर होने के बाद दोबारा चुन करके आ गए हैं और कुछ का जून में पता चलेगा कि उनमें से कौन आएंगे, जो भी आएंगे मैं सब उनको बधाई देता हूं। सर, 2 साल पहले भी मेरी पार्टी की तरफ से विदाई के अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला था। मैंने 2-3 बिंदु उठाए थे, मैं आज उनको दोहराना चाहता हूं। मैं कुछ दिनों एक्स एमपी रहा हूं। 2020 नवंबर में रिटायर हुआ था और जुलाई 2022 तक मैं एक्स एमपी था। बहुत सारे एमपीज और एक्स एमपीज बहुत व्यवस्थित जीवन जीते हैं। उन्हें किसी सपोर्ट की, सहारे की, किसी मदद की जरूरत नहीं होती है। उनके सारे इंतजाम सदन में आने से पहले भी परफेक्ट होते हैं
और सदन में जाने के बाद भी सदन से उनके परफेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जिन्होंने जीवन में कभी कोई दूसरा काम किया नहीं और शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जीवन व्यतीत करने का फैसला किया, तो उन्हें जो आफ्टर रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं वो सुचारू रूप से मिलें, इस बात की बहुत जरूरत होती है। मैंने पिछली बार कहा था कि सीजीएचएस का इलाज आजीवन एमपीज को मिलता है, लेकिन उसके बिलिंग वगैरह का बहुत मसला होता है, दफ्तरों में कई में चक्कर लगाने पड़ते हैं। मनसुख मांडविया साहब उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने तुरंत ही उसका संज्ञान लिया और रिटायर्ड एमपीज के लिए एक अलग से काउंटर खोल दिया, लेकिन आधा काम बाकी रह गया। हॉस्पिटल्स में जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है, जो मौजूदा एमपी को बड़ी तत्परता के साथ उनका इलाज करवाता है, एक्स एमपीज के साथ मैं 19 महीने एक्स एमपी रहा हूं, उनका रुख बड़ा बेरुखा होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे नेता सदन है, आज इस वक्त यहां नहीं है, उनकी तरफ से तमाम हॉस्पिटल्स को जाना चाहिए कि सीजीएचएस बेनिफिशियरी जो एक्स एमपीज हैं उन्हें भी कम से कम उसी तरीके से वो उनको ट्रीट करें जिस तरीके से मौजूदा एमपीज को करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो समस्या अभी तक बनी हुई है। अश्विनी वैष्णव जी पिछली बार थे सदन में, इस वक्त अभी यहां नहीं हैं। रेलवे का मसला, हम एमपी हैं, टेलीफोन उठाते हैं, हमारा रिजर्वेशन हो जाता है। एक्स एमपी को खुद या किसी को भेजना पड़ता है काउंटर पे, उनका टेलीफोन से रिजर्वेशन परमिटेड नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कोई इसके अंदर खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर रेल मंत्रालय से एक सर्कुलर चला जाएगा उन जगहों पर जहां रिजर्वेशन होता है कि भाई एक्स एमपी का टेलीफोन से आप रिजर्वेशन कर दिया करें, तो मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना तो सरकार पर पड़ने वाला है, ना किसी प्रकार की हानि होने वाली है। एक सम्मान भी बचा रहेगा और थोड़ा बुढ़ापे में लाइन में लगने से या किसी दूसरे की खुशामद करने से कि हमारा कार्ड लेकर के जा करके वहां आप रिजर्वेशन करवा के ला दो, वो भी मसला हल हो जाएगा। और फिर फोन से जब बुकिंग होगी तो फिर टिकट की कंफर्मेशन के लिए भी आसानी हो जाएगी, वरना वहां जाकर के लेटर डाल करके आना पड़ता है। ये दूसरा मसला है, इस पर मेरे ख्याल से संज्ञान आपको लेना चाहिए, मंत्रियों को लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए। और तीसरी आखिरी बात जो और साथियों ने भी कही है कि इस नई बिल्डिंग के अंदर हमें सेंट्रल हॉल की बहुत कमी महसूस होती है। सेंट्रल हॉल की बहुत ज्यादा कमी महसूस होती है और पिछले कुछ दिनों तो ऐसा दौर भी देखा कि सदन से निकलते वक्त हमें अपने ऊपर शर्म आती थी। 20-20 साल के एमपी जो एक्स हो गए थे, सीढ़ियों के बाहर यूं करके मुंह उठा करके खड़े रहते थे कि कोई आएगा तो उसके जरिए हम संदेश भिजवाएंगे। लेकिन अब 2-3 सेशन से ये मसला तो हल हो गया है, एक्स एमपीज अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद वो जाएं कहां जाएं? सामने खड़े होते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं। कैंटीन्स भी यहां 3 हैं, एक जगह ढूंढो, 2 जगह ढूंढो, तीसरी जगह ढूंढो अगर किसी से मिलना है। बड़ी समस्या है। इसी के अंदर कोई ऐसी जगह देखें, तलाशें, जगह ढूंढी जा सकती है कि कॉमन बैठने का एक जरिया कोई बन जाए जहां सब लोग आपस में मेल जोल बना सकें, अगली पिछली बातों को शेयर कर सकें और आपस में बातचीत कर सकें। पास बैठने से कोई नुकसान नहीं है। अगर पक्ष विपक्ष नए पुराने सब लोग एक साथ बैठेंगे तो उससे और ज्यादा सद्भाव बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा होने वाले साथियों को बधाई देते हुए और वापस आने वाले साथियों को बधाई देते हुए और विदा होने वाले साथियों को विदाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Diplomatic passport also we should. Diplomatic passport. Thank you. श्रीमान अजीत कुमार भूया जी, श्रीमान अजीत कुमार भूया जी। Honorable Vice Chairman, sir,
and respected colleagues. Today I rise to speak with a deep sense of reflection. Ajir pora, I'd like to speak in my own language. Sobosor agote, moi jetia Rajya Sabhat probesh korisilu, when I entered Rajya Sabha, Venkaiah Naidu asile chairman, aru jijone মাতৃভাষাৰ কোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল বাদিবাই মোৰ মনত পৰিছে মোটিভেট কৰিছিলে আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মই the lone opposition voice. I don't think he had given a previous request. Had you given a previous request for translation in Assamese? Bola tha? So would you like to then come little later and then we can take you up No, once yes, the translation? I informed them. Okay, so right now the translation is not here. Do you want to do it little later so that we can arrange the translation? We can continue without translation if you allow. As you like. Okay. Shall I continue? Sure, please continue. Please continue. If no one has an objection, we can continue. ट्रांसलेट कर ले Sure. तो लाइव जा रहा है Shall I continue? Yes, लाइव So, वीडियो शेयर कर रहा है कौन তেখেতে নৰ্থ ইষ্টৰ ডনিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত স্পেচিয়েল ডিছকাশ্যন এলাউ কৰিছিল আৰু তাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ that was a very good debate আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ সন্মানীয় জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়াই মোক সহায় কৰিছিলে আৰু তেখেতে গাইড কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা মোক কিছু সময় দিছিলে আজি 3 মিনিটৰ সাংসদ হিচাপে as Priyanka ji has told कि আমি 3 মিনিটৰ সাংসদ আছিলোঁ 3 মিনিটত আমি সকলো কথা we tried to raise our issues only in 3-4 minutes কিন্তু আজি হয়তো আমাৰ তেনেকুৱা বাধা নাই today we are very emotional কাৰণ আমি ইয়াৰ পৰা গুচি যাম আৰু কোনবাই কৈছে যে এক্স এমপি এটা বস্তু থাকি যায় সেইটো হ'ল এক্স এমপি এমপিৰ পৰা এইটো বস্তু কোনো নিব নোৱাৰে আৰু যদিও আজি জাভেদ আলী খান আৰু সঞ্জয় সিঙে যিখিনি সাজেশন দিছে এইখিনি মই ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাটো আশা কৰিছোঁ আৰু মই সাংসদ হোৱাৰ আগতে এই পলিটিক্সলৈ অহাৰ আগতে মই এজন সাংবাদিক আছিলোঁ আৰু জীৱনৰ বহুত সময় মই সাংবাদিকতা কৰিছোঁ মই ৰিপৰ্টাৰ আছিলোঁ এডিটৰ আছিলোঁ both in print media and television media. আৰু মই প্ৰায় more than 45 years I was in journalism. তাৰপিছত in a very peculiar situation. এটা বৰ আজিকালি অৱশ্যে ক'বলৈ বেয়া লাগে সেই জাৰ্নেলিজম নাই আমি যিটো কৰি আহিছিলোঁ এতিয়া সেইকাৰণে সেই সময়ত এটা suddenly মই বিৰোধীৰ সন্মিলিত অপজিশ্যনৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সদস্য হিচাপে ইয়াত মই প্ৰৱেশ কৰিলোঁ মই এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু উইথ দি ছাপৰ্ট অফ কংগ্ৰেছ এণ্ড আদাৰ অপজিশ্যন পলিটিকেল পাৰ্টিজ দোজ হু আৰ অপ'জ টু বিজেপি এতিয়া মই মনত পৰিছে মোৰ সাংবাদিকতাৰ মই যিটো সততা যিটো অনেষ্টি আৰু মই যিটো কুৱেশ্যন আমাৰ চৰকাৰক যিটো প্ৰশ্ন কৰাৰ কথা থাকে অধিকাৰ সেইটো প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই কাম কৰা সাৰ্কুলেশ্যন পেপাৰৰ সাৰ্কুলেশ্যন আৰু টেলিভিছনৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা হৈছিলে আৰু চৰকাৰে কনজিকিউটিভ গভৰ্ণমেণ্টে মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু মোক তেওঁলোকে জেলত সোমোৱাইছিলে সেইবোৰ কথা মই ক'বলৈ আজি নাযাওঁ কিন্তু মই এইটো কৈছোঁ যে ফ্ৰম 4th state to parliament সেইকাৰণে মই কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ যে পিলাৰ অফ ডেমক্ৰেসি বুলি যি 4টা কথা কোৱা হয় তাত এটাত মই আছিলোঁ জাৰ্নেলিজমত তাৰপিছত ছেকেণ্ড মই আহিছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ইয়াত 6 বছৰ মোৰ কি অভিজ্ঞতা হ'ল সেই কথা মই খুব সবিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা যে ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হ'ল নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু যিটোৱে মোক সমৃদ্ধ কৰিলে সেই কথাটো মই নিশ্চয় আজি উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু মই এই সংসদত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত মই একো ভাবিব পৰা নাই যে মই কোনফালে যাম কি কৰিম আৰু সেই সময়তে মোক জয়ৰাম ৰমেশ ডাঙৰীয়া মনোজ কুমাৰ ঝা
আৰু আজি বহুদিন ধৰি মোৰ কাষতে বহি থকা জাভেদ আলী খান এওঁলোকে জন ব্ৰুটাছ মুকুল ৱাছনিক দিগ্বিজয় সিং ডাঙৰীয়া আৰু বহুতে মোক বিভিন্ন সময়ত সহায় কৰিছে আৰু এখেতসকলৰ বক্তৃতা শুনিবৰ কাৰণে মই সদায় খুব অপেক্ষা কৰিছিলোঁ কাৰণ মই সকলোৰে পৰা অলপ অলপ শিকাৰ যত্ন কৰিছিলোঁ মই এজন ভাল পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ান হ'ব নোৱাৰিলোঁ 6 বছৰত কোনোবা এজন ভাল পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ান হ'ব পৰাকৈ মোৰ যি যোগ্যতা এইটো নাই কিন্তু মই যিসকলে ভাল ভাষণ দিয়ে যিসকলে খুব ভালকৈ কয় মোৰ সন্মুখত বহি আছে প্ৰিয়ংকা চতুৰ্বেদী চাকে এইসকলৰ বক্তৃতা মই খুব আনন্দৰে শুনিছিলোঁ আৰু খুব আগ্ৰহেৰে শুনিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ কথা মই আপুনি চেয়াৰত বহি আছে আপুনি প্ৰথম আজি মোৰ কথা উল্লেখ কৰিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ যে জ্ঞান আপোনাৰ যিটো প্ৰেজেণ্টেশ্যন এইটো কথাই মোক সদায় মুগ্ধ কৰিছিলে গতিকে মই তিনিগৰাকী চেয়াৰমেনক পালোঁ বৰ্তমানৰ গৰাকীক মই হয়তো বৰ বেছি দিন পোৱা নাই নাপালোঁ কিন্তু হ'লেও তেখেতৰ যি ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বই মোক যথেষ্ট আকৃষ্ট কৰিছিলে আৰু সংসদৰ এগৰাকী সাংসদ হিচাপে মোৰ যি অভিজ্ঞতা হ'ল সেইটো এটা ৰিমাৰ্কেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইয়াত মই লিডাৰ স্কলাৰ্ছ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ এক্সপাৰ্টছ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ফিল্ডছ এইসকলক লগ পালোঁ আৰু শুনিলোঁ আৰু এইটোৱে মোৰ ওৱান অফ দি গ্ৰেটেষ্ট প্ৰিভিলেজ অফ মাই পাব্লিক লাইফ তাৰপিছত মই জাৰ্নেলিজিমৰ কথা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে my years as an editor taught me certain values questioning authority defending truth and respecting the intelligence of the people আৰু যি কাৰণে মই কৈছোঁ যে মই চৰকাৰৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে আৰু মই এজন পাব্লিক এক্টিভিষ্ট আছিলোঁ ইয়াতো মই সংসদৰ ভিতৰতো আছে প্ৰতিবাদ বাহিৰতো মই যিমানবিলাক প্ৰতিবাদ হৈছোঁ যিটো কথা আমাৰ CPMৰ শিৱদৰ্শনে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে মই চেষ্টা কৰিছোঁ অন্ততঃ চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে মোক মনত ৰাখিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ মই খুব ভাল পাৰ্লিমেণ্টেৰিয়ান নহয় 6 বছৰত মই কিমান শিকিলোঁ কিমান পাৰিলোঁ মই বিচাৰ কৰাৰ মোৰ যোগ্যতা নাই কিন্তু যিসকলে মোক সহায় কৰিলে যিসকলে মোক গাইড কৰিলে তেখেতসকলক মই এই সুযোগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই ইয়াতো ঠিক মই সাংবাদিকতা কৰাৰ দৰেই মই ইয়াতো যথেষ্ট প্ৰশ্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু 3 মিনিট 4 মিনিটত মই মোৰ নৰ্থ ইষ্টৰ নেগলেক্টেড অসমৰ মই বহুত কথা ইয়াত বিভিন্ন ইছ্যুজ পাৰ্টেনিং টু দ্য ষ্টেট মই ইয়াত উত্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কি কৰিব পাৰিলোঁ মই নাজানো কিন্তু মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়া আজিকালি হোৱাটছআপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যুগত মিডিয়া চেলত আমাৰ বিৰুদ্ধে বহুত মানে সমালোচনা হয় কেম্পেইন হয় কিন্তু তাৰ মাজত আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মই আজি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'বৰ সময়ত নিশ্চয় খুব কষ্ট পাইছোঁ দুখ পাইছোঁ কাৰণ কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এটা ফেমিলিৰ দৰে ইয়াত থাকিব পাৰিছিলোঁ মই যেতিয়া দনিয়াৰ ওপৰত বক্তৃতা দিছিলোঁ তেতিয়া ৰুলিং পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা বহুত সদস্যই মোক ধন্যবাদ জনাইছিলে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছিলে যিটো কথা মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম গতিকে মই খুব বেছি নকওঁ এইটোৱে ক'ম যে নতুন যিটো জেনেৰেশ্যন আহিছে মই পেছিমিষ্ট নহয় আই এম নট এ পেছিমিষ্ট দ্য ফিউচাৰ অফ আৱাৰ ডেম'ক্ৰেচি will be shaped by new ideas, new energy, and new leadership. I am optimistic about that. যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ আৰু আগবাঢ়ি যাব বহুত বাধা বিঘিনিৰ মাজতো আজিও ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ জীয়াই আছে ইয়াক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব শেষত মই ক'ম যে as I deliver my last speech to this house I live with gratitude for the opportunity to serve, for the friendship across party lines, and for the privilege of being part of this great democratic institution. From the newsroom to parliament, my journey has strengthened one belief that India's democracy will continue to grow stronger with each generation. Thank you, sir. Thank you.
Thank you. Thank you. Shriman Ayodhya Rami Reddy Allaji. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. As I come to the close of my tenure in the Rajya Sabha, I rise today with a deep sense of gratitude to serve in this august house is a privilege that very few receive, and I will always value the opportunity to have contributed to the work of Parliament and to the strength of our democracy and our nation. Sir, at this point, I wanted to thank my grandmother who gave me the clear values and vision to serve my country, and also my father and mother who always encouraged me that before you get into social life, political life, you must make yourself a highly disciplined personal and professional life. Having achieved those things, then only you must step in and you should work as a role model so that, this country, always country is first, समाज उसके बाद, and then उसके बाद ही आप और आपका जो भी विचार. तो वो जो भावना से हमको ये हाउस में भेजा गया था, तो उसके लिए I wanted to thank my parents and grandparents and also thank my family. Sir, also I wanted to thank my party leader, Mr. Jagan Mohan Reddy, who from YSR Congress party has sent me to this august house. He has placed trust in me, and I am equally grateful to the people and institutions that support me through this journey. Sir, this house has given me a platform to speak not only for my state, but also for the larger national interest. Over these years, I have tried to approach every issue with sincerity, focusing on development, welfare, and ensuring that the voice of ordinary citizens of this nation finds space in national policy. Sir, what I wanted to say is that this house, a great house, this country, I believe, has a great future. For a great country to get into that great future, there is some goal and direction given by the Honorable Prime Minister. If we have to be a Viksit Bharat, a developed nation, where the quality of life of every citizen of this country and also the entire nature of this country to be the best in the world, we are anyhow seeing that we will be the third largest economy, but we should look at becoming the best environmentally conscious and sensitive nation and society. If we can build that, no one in this world can compete with us. So I want the nation to focus not alone economically, but also on environmental consciousness, to see that all the people and all the ecosystem around us also equally goes up. For that, we have to bring in right kind of policies. For that, this honorable house, this house, we have to have clear deliverables for next 25 years. How we have to strategize to run this house, how we have to structure our way of working, and also the deliverables around all the stakeholders of this house, starting from this chair to every member of this house, the clear deliverables that need to be properly written down, because we have a very big goal to achieve. For that, highest level of discipline, hard working, a proper responsible areas for each one of us, and then
how we have to achieve those responsibilities as each and every parliamentarian. And are we doing that rightfully? Not alone this house, but also every political party, they need to look at. They also need to provide the deliverables to every parliamentarian. And they have to review them and also has to audit. And also audit findings of every individual and every political party must come back and to be shown. And then with that sort of a mindset and with sort of a outcome, I think the entire house will be made accountable, not just for themselves, for their party, but for the nation, for which the foundation our elders have already laid. Past was fantastic, but present day, how are we making it to see that our future children are happily survived and sustained a happy life? So for that, sir, I think this current generation, current platform, of this house need to really re-strategize our vision plans and also deliverable plans, with which actually I want the effectiveness of working of this house must increase. People have to be, I see, attendance must go up. The house should work for more hours, and we should have offline lot of committee meetings. I'm also seeing the committee meetings importance has to really go up. People have to be prepared, ready to get into the committees with valuable questions and also give directions to the committee so that those mini parliaments come and help and support this parliament, so that the effectiveness of all the stakeholders really go up. I sincerely want that if we have to become the developed nation, I think the house and the people of this house must really revisit their working, and also their deliverables must be rewritten. Sir, I will carry with me most is the culture of the Rajya Sabha, the debate and the dignity with which this house is conducted, differences without bitterness, and an emphasis on reason. Many members here may belong to different political streams, but we are united by a shared duty to uphold the Constitution and strengthen the institutions. I see that is the character I have seen in this house. I have learned from colleagues across party lines, and I acknowledge the courtesy and cooperation extended to me during my term. Sir, I also place on record my appreciations and thanks to the chair, and also to the honorable chairman, deputy chairman, sir, panel chairmen, and all the floor leaders and senior colleagues from whom I have learnt a lot. The officers and staff of the Secretariat who work tirelessly to ensure that the house functions smoothly and efficiently. I saw a lot of professionalism and fairness among all the people that are working here. Sir, as I step down, I do so with humility, not as an end, but as a transition. Public service continues beyond any one office. I will remain committed to serving my people and contributing whatever I can, guided by the values of integrity, discipline, commitment, hard work, and respect for democratic institutions. I wish to see our country achieve Viksit Bharat, and I am happy to be part of this journey. Thank you. Thank you once again. Namaskar, sir. Thank you, sir. Honorable Shriman G.K. Vasanji will speak in Tamil. Thank you, sir, for giving me an opportunity to speak in Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். பாராளுமன்ற மேலவையிலே என்னுடைய மூன்றாவது முறை 2020-26 இந்த அவைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பை அளித்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமைக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைமைக்கும்
என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ராஜ்யசபையை பொறுத்தவரையில இது என்னுடைய 18வது வருடம். ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த அவையிலே ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பாடம், இது ஒரு கல்விச்சாலை, ஒரு யூனிவர்சிட்டி, பல்கலைக்கழகம். இங்கே உறுப்பினராக இருப்பவர்கள் எல்லாம் பல்துறையை சார்ந்த மரியாதைக்குரியவர்கள். ஒவ்வொருவர் கூறும் கருத்தும் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு பாடமாக நமக்கு இருக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய கட்சி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மூப்பனார் பெயரிலே நான் தமிழக மக்களுடைய எண்ணங்களை இந்த அவையிலே பிரதிபலித்திருக்கிறேன் என்ற மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்கிறது. அதே போல என்னுடைய கட்சியின் சார்பிலே இந்தியாவினுடைய பொருளாதார உயர்வு, இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்புக்கு இந்த அவையிலே நான் குரல் கொடுத்திருக்கிறேன் என்று பெருமையோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். இந்த அவையை பொறுத்தவரையிலே ஆளும் கட்சி, எதிர்கட்சி, மரியாதைக்குரிய மூத்த தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள் மற்றும் இந்த அவையை நடத்தும் ராஜ்யசபை செக்ரட்டேரியட் நிர்வாகிகள் எனக்கு கொடுத்த ஒத்துழைப்புக்கு இந்த நேரத்திலே நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிக முக்கியமாக காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை இங்கே ஜாதி, மதம், மொழி, இனம் இவைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நம்முடைய ராஜ்யசபை உறுப்பினர்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருவரும் அன்போடு பண்போடு பழகிக் கொள்கிறார்கள். உற்றார் உறவினர்கள், நண்பர்கள், நலன் விரும்பிகள், சகோதர சகோதரிகளாக இங்கே அவர்கள் பழகுவது மிகுந்த மனநிறைவை தருகிறது, மகிழ்ச்சியை தருகிறது. சபையின் காலம் முடிந்த பிறகு கூட ஒவ்வொருவருக்கும் தொடர்பு பல வருடங்கள் இருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கிறது. மேலும் குறிப்பாக இந்த அவையினுடைய மரியாதைக்குரிய தலைவர் சேர்மன் ஐயா சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நடுநிலையான செயல்பாட்டு